management side, and then we'll open, it will be more of a interactive session to, talk to you guys. Try to understand thoda ki what, what's going on within the. हेलो आवाज हेलो आवाज मुझे लगा मेरा गया मुझे लगा मैं भी फटा हूँ मुझे लगा मेरा गया आई थिंक लाइट का लाइट गया ओ तो फिर लाइट भाई की लाइट लाइट गया लाइट का लाइट चल okay let's start. Basically the format would be that we'll be addressing some points and concerns that have been happening, and we thought that we'll address it to the whole community. And then after that, we'll open PTS for the whitelisted players to share their things of in case they have any concern, if in case they want any feedback around anything, we'll open that, and then we'll try to end it on time because I'm sure a lot of people would want to do RP in the next one and a half hour or so. So yeah, let me do one thing. Also, let me just check with light if. No, I'm back. It's just a minor headset got disconnected. So, guys, first of all, I mean, it has been amazing. I would say great roller coaster ride last 2 months for us. Been crazy for the whole team and you guys supporting us. Initially, server apne I'd not say alpha, I'd say beta stage was going through. Initially, we knew ki a lot of things that we are testing when exposed to a bigger player base. हम लोग को और चीजें पता चलेंगी. We'll get to know a lot of shortcomings. We'll get to know things that we could have done a little better. But it was a good learning experience. So people help us with a lot of things, with bug reports and new ideas also. Yeah, enhance kar sakta hai, maybe the role play experience for the team, and we are trying to adapt. I mean, again, it's a development process, but I think we as in management, we were talking, we constantly keep talking, we were super happy to talking and overwhelmed with the response. So first of all, thank you. And when I say this, I know I have Anna sitting here and Goldibai sitting here. I think we all share the same feeling that, first of all, thank you to, first give us such a great response and, being a part of, a newer community within, this banner. Uske baad, I mean, there are some, things that we definitely want to talk about. We'll go one by one, some department-wise issues, and then aap log ka bhi issues we'll listen to. But I think to start on a good note, this would be, I'd say the right things to say is we definitely have been, blessed. Amazing community, first of all, and it's constantly growing, which is great. Then we're constantly putting more efforts, but at the same point, I think we're really happy within 4 to 5 months of development, where we stand right now, I feel ki is again, it feels like a little feat where we got a chance to showcase a lot of Indian developers. And they're doing amazing. So I'm like, we're super proud of our dev team. And they're doing amazing. And anyone who was a part, at some point in time, probably a lot of people who worked with us as freelancers, they've been amazing. And all credit goes to them for anything that you guys feel ki is really good in the server, and all credit goes to them. Coming down to, I think, other parts, I'll probably forward thoda sa, I'll forward it to, maybe like session, maybe Anna first. I think Anna, T-Bone, Goldibai, they're here if they want to say something to kick this off. Matlab, I think that'd be great. What do you say, Lex? Definitely. I mean, I want to hear from Anna and T-Bone, what did they expect? And I mean,
Did the community meet their expectation? How was the whole journey? सारा सब. अन्ना स्टार्ट करो. Oh, मेरे को ही बोल दिया. See, okay. Thank you guys. Thank you for having me here, and thanks to everyone who is a part of this community. When we first started off an RP server, the vision was obviously to bring all of you guys together on one page where we can have our own server and almost like cater to the needs of each and every one instead of having some random stuff. And plus the major goal for me was I knew for a fact that we had a much bigger audience base and much bigger player base in terms of GTA 5. This is not the first time for me doing this. I did have a server before, and that's when I realized that we have a lot more potential. But back then, VLT was nothing, so nobody really took notice of what we have done. But couple of years later, after what we have achieved in multiple divisions, I thought this is the right time to get into this thing and give you all a better experience and a much more personalized experience is what I wanted to do. And obviously to get more people who have never tried roleplay before into the server so that they also experience what kind of a game this is firsthand and what kind of content can be made using this facility. So in that aspect, I'm very happy with the kind of response we've been getting. And obviously, it is not 100% perfect. I do get that fact. It is a learning process for everyone, and I want to learn from you guys as well, so that in future, whatever we do is in the path that my community requests and not something that we decide. So that's it from my side. Thank you, Anna. But yeah, I mean, it was for us. I think Anna supported us like, and I mean, we had a kind of a a really good thing going on within management where I think this actually looks this easy to manage. It definitely was not. Matlab, we all and handling, with the bandwidth we are handling, definitely. And but other than, I think everyone who helps us with all the whitelisting process, everything has been amazing. With that being said, दूसरा बहुत important point था जो I think Anna ने mention किया that we are bringing a lot of new people who have never experienced role play into a server where definitely being in whitelisted environment, we wanted, and the community I think has to a lot level also has supported being really welcoming, and I think guys, you guys need to keep that up for a little while. हम लोग everyone is learning as we go, and we are seeing some amazing role play coming from people who are probably trying it for the first time. So again, mistakes happen, things, those kind of stuff happen. Everyone, I think, to the best of us. But I've seen some amazing role play, and we see, the role play look RP appreciation channel getting slammed with a lot of those new names who were, introduced new to the community, but they're doing super well. So thank you for being welcoming, and I would say please continue to do that because we'll keep adding more people to play with you guys. It's just I think it's just a very happy time for us to know that we're a very rapidly growing community at this point of time. So I mean, I think that's definitely one plus. But I'd say when we say that there has been mistakes, there are, but we are also trying to work on those things where we feel that they're very basic. We are trying to educate. जो भी एक possible steps होना चाहिए. Maybe where we feel that there's something जिसको educate कर सकते हैं. Some first time when you talk to people, they understand, and we move on those things, or if there are strict actions needed, for forth. And I think
I'm really happy that we do not have a lot of reports and tickets, which is a really happy thing going on. I think we are entering our third month, so I think उस हिसाब से we're like I feel that it's a very healthy state to be at a place where I feel कि it's all very harmonious right now, and please keep it that way. But I'll pass it on to Lex now. He'll have more points because I'm running out of them. So I'll pass it on to Lex and then anyone else at T-Bone, Apo, I mean anyone who wants to T-Bone. Before we get on to the points, just have Goldie also say something of his Yes, experience. I was just about also, to add to the And fact before that before we let Goldie speak, because he'll not let us, once he starts, he'll not probably let us say all this. But then we're blessed to have Goldie playing with us, and he's just been amazing. Also one of the people that I was saying who I saw first time playing roleplay and I was doing amazing is, I think, definitely one name. So Goldie and the whole huge community which he supports and he uplifts, within IGC. I think that has been amazing. So yeah, thank you first of all, Goldie, and then please. Thank you so much. I don't think I deserve that, but I'll take it from there. Coming back to VLT, like role play. So as soon as Anna decided to get into this thing, I had a call with Anna. Anna called me. Like, we always have been discussing about business ideas, strategies, working styles. मतलब Anna has been one of those person जिनको I think gaming में जब से वो आए हैं has been, and I feel very proud to have that feeling that Anna always keep us on the number one priority to ask for any assistance, and we keep him no other than our family. And just because of that mobile community and PC community का जो एक gap था, sorry to say that, I mean like जब मैं ये e-sports वर्ल्ड में एक्चुअली आया था तो मैंने तब बहुत टॉक्सिसिटी सुना था कि मोबाइल एंड पीसी के बीच में काफी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन ऑफ पीपल एंड ऑडियंस एंड थिंग्स लाइक दोस एंड एक्चुअली मतलब वो काफी टाइम तक रहा बट आफ्टर बीजेपी पबजी मोबाइल गॉट बैंड me and my guys and my people, everyone here, Mamba, Regaltos, Mercy, Kustika, everyone is here. I mean, like, who've been a major part of my family, our system, to bring this family to the world stage now. Thankfully to all of you and everyone whose support is still now. तो तब हम लोग को रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ है करने के लिए. आई मीन लाइक वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ गेम्स. हम लोगों ने वालो एंड हर तरह का गेम खेला पीसी का 1 साल तक. None of our creators stopped from streaming. Mostly everyone was BGMI PUBG based streamer. But we stood at our will that we won't shut this down and we'll keep on moving. And we created a lot of content apart from gaming, because of which probably we got nominated for the esports award as well. And I take very pride in saying that it's been first time ever that any Indian टीम एंड द इंस्पिरेशन जिनको हम लोग 100 थी फेस क्लैन जिनको देख के हम लोग काम करते थे, वी आर कंटेस्टिंग राइट नेक्स्ट टू देम. एंड कमिंग टू द रोल प्ले थिंग, वी नेवर थॉट ऑफ डूइंग इट. मैंने टीबोन के साथ आई थिंक 1-2 बारी 3-4 बारी रोल प्ले किया है, बट दैट वाज अनदर थिंग. लाइक लेट्स कीप इट पर्सनल. सो वो करना था इसलिए करा है बस, नो इंटरेस्ट. But very strangely, जब अन्ना का कॉल आया and I was like, we are all in Anna for whatever you do. We SATL family is always there for you. And we started off this thing like मतलब Mamba भी है, इधर Rega भी है. Rega joined late, but Mamba also joined late. Mercy, Mafia, these guys were initially in the server only. And we started this off on a very, very positive and a very mixed type of note. And a lot of my people, especially in SATUL, they know how much I've bullied them regarding the rules and regulations of the server and RP, basic RP. मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ. I think I'm in a very long distance. I have a long distance to cover, but I'm trying to learn and trying to avoid mistakes. So everyone here who have faced any kind of wrong thing, mistakes from our end or my team's end from SATUL, and
like to apologize on their behalf and my behalf. But just on the brighter note, I'm just trying to say that we are learning and we are here to take this culture to the next level. A lot of new people are coming up, new faces are showing up. I'm glad a lot of people are, I'm very happy to see a lot of new streamers evolving, and they're doing pretty good and people are showing love towards them. And my message to all the audience who have always supported us also to keep on supporting this community. I'm like, it's very, very, very rare to see 300, 400 plus streamers, gamers sitting at a place, with the same thought process and trying to learn and trying to grow a single community. I'm like, it's very commendable from everyone's side. And thank you to all the admins and everyone involved in this, especially Light, Lex, everyone जिन्होंने हम लोग को झेला है अभी तक, and you all जिन्होंने हमको help किया आरपी प्रोग्रेस करने में, सिखाने में. Lot of you guys, I don't think it will be fair to name anyone in particular. I might miss somebody, so let's take it that way. जिन्होंने आप हमको help किया है. So yeah, we'll take this culture to the next level. We'll take it internationally, slowly, gradually. And thank you everyone once again for letting me speak here. It's a moment of honor and pride for me, and we'll keep on growing. And I assure you, everyone, each and every one of you will grow together. Like we always say, nothing अकेले कुछ नहीं करेंगे, सब मिलके करेंगे. Good luck to everyone. Thank you. Thank you, Lex. Thank you, Light. Thank you, Anna, T-Bone. On behalf of my entire SATUL and everyone, thank you. Thank you, अरे नहीं गोली भाई, Thank you, आप Goldie तो bhai. thank you बोल रहे हो. नहीं, you don't have to thank you. You don't have to say thank you to us. No, it's my Family में there is no thank you. So obviously, that's but the thing. बस happens. नहीं, It's बस just a good thing, yeah. आप देखो ना, आपके लिए मीटिंग चैट में लोग ऑ कर रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं, ऊपर देखो डिस्कॉर्ड में मीटिंग चैट आपने. Thank you. सही. Thank you. So honestly, coming back to the whole thing, where honestly just almost a year back, when I personally started playing RP, I never thought that a year and a half back that I would be Solid here ice. someday. But honestly, this has just happened because of it has happened because of a lot of people, but the 2-3 main people have been Light, Exion, T-Bone, and Anna. Without these guys, this would not have been possible. अब मैं आगे और थोड़ा सा सबसे पहली बात मैं हिंदी में बोलूंगा बिकॉज लॉट पीपल हैव सेड कि हिंदी में बात करो. हाँ. तो मैं हिंदी में बोलूंगा, कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की जितना बोल सकूं. Coming back to the points, that the reason that we wanted to have a community meeting was there are community बड़ी हो रही है. We are seeing long queues. We are trying to resolve a lot of issues. A lot of issues have come. बहुत चीजें जो हैं हमने बहुत जगह गलतियां करी हैं, तो सबसे पहले उसके लिए we are really sorry. We obviously tried to do our best, लेकिन कुछ चीजें काफी जगहों पे हम लोगों से गलतियां हुई हैं. तो कुछ एक्सपीरियंस में किसी चीज में कुछ भी गड़बड़ हुई हो तो we are really sorry about that, genuinely. But we are constantly up. I'm sure you guys have also witnessed that we try to become better. We have tried to become better even after what all has happened. I mean, a lot of people felt that about a lot of things कि नहीं हो पाएगा. But luckily, by God's grace and by everyone sitting in this VC and staff and the community, we guys have been able to make it, and it's going good right now. But the major issue, when things are going good, there are a lot of things that need to be addressed, because the pace that we are moving at right now, there might be some things that which might not be going right in the back end, which we have noticed. अरे यार अच्छा हिंदी हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं बैकग्राउंड में जो कि ठीक नहीं हो रही, और बेसिकली इसीलिए कम्युनिटी मीटिंग रखी है ताकि वो चीजें हम एड्रेस कर पाए अभी फिलहाल. क्योंकि हमें पता है कुछ चीजें स्पीड की वजह से, जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं उस वजह से नहीं हो पा रही हैं. हम भी बहुत ज्यादा चीजों पे कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं, बट unfortunately, fortunately, I don't know what I should say. There are times that we have to do and take certain decisions ताकि
कम्युनिटी आगे बढ़े और कम्युनिटी के साथ सब चीजें हो, फेयर रहे हम। बाकी लाइट भाई, डू यू वांट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट और I should think just randomly हाँ go? नहीं, I can start with the first one. तो हाँ there are a lot of मतलब बेसिक टाइम साइड से अच्छा ओके सॉरी, मैं कह रहा था कि हम लोग एक रूल बुक फॉलो करके चल रहे थे जिसमें हमने काफी बेसिक रूल्स जॉट डाउन किए थे फॉर जो भी रोल प्ले सपोर्ट होगा, जो भी सर्वर के मैकेनिक्स के हिसाब से सपोर्ट होना चाहिए, आई से उन सब चीजों को आई थिंक ध्यान में रखते हुए आई फील कि वो काफी सारी चीजें होती है ओवर टाइम लोग भूल जाते हैं, या फिर वो पॉइंट शायद मतलब वो शायद इनिशियली शुरू से ही नहीं पढ़ा कभी, तो वो चीजें रह जाती हैं। एक इनिशिएटिव हम लोगों की तरफ से ये होगा कि हम लोग एक चैनल होगा जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिमाइंड कराते रहेंगे कम्युनिटी को, जो हम लोगों को लगेगा कि शायद उसके एक रिमाइंडर की जरूरत है। तो उसको कभी भी आप लोग ऐसे टारगेटेड फील मत करना, इट इज नॉट टू टारगेट एनीवन। व्हेनेवर वी सेंड आउट वी सी कि मल्टीपल सिमिलर मिस्टेक्स हो रही हैं, we'll just put down उस रोल का मतलब उस रोल का पैराग्राफ बैक अगेन एक्सप्लेनिंग। अगर कभी किसी को कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री, ओपन ए टिकट, टॉक टू अस, और हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों है वो रोल। I mean, and हम लोग we're always ready to understand that if there could be a better role, या अगर वो नहीं है तो अगर कोई रोल ऐसा होना चाहिए जो बनना चाहिए जिससे कि रोल प्ले एक्सपीरियंस इनहांस हो सकता है। फर्स्ट तो एक सेक्शन होगा वो जरूर। आई प्रमोट अ लॉट ऑफ पीपल टू डू आरपी अप्रिसिएशन। आप लोग जब वो करते हो, खासकर द पीपल हु आर बीन प्लेइंग रोल प्ले फॉर पास्ट टाइम, आई थिंक बहुत सारे न्यू रोल प्लेयर्स को मैं देखता हूँ जो वो सिचुएशंस में सोच रहे होते हैं कि मैंने सही किया गलत किया। अगर आप लोगों को सही में लगता है कि रोल प्ले अच्छा हुआ है, जस्ट गो राइट अ वन लाइनर। उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि या सही थी वो सिचुएशन, अच्छी की मैंने, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो एंड आई नो अ लॉट ऑफ वी ओल्ड रोल प्लेयर्स, जब हम लोग बोलते हैं आई थिंक दोज वर्ड्स मैटर। तो आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज हियर, व्हेन यू गाइज विल से वो चीजें मैटर करेगी उनके लिए, तो मैं आई डेफिनेटली मोटिवेट यू गाइज टू गो डू दैट। Third, because we have a lot of people here who stream, we wanted to create a self promotion टाइप का एक चैनल जिसमें आप लोग देयर इज ऑलवेज ऑलरेडी अ चैनल जिसमें लोग क्लिप शेयर कर सकते हैं अपने वार्ड्स की, अगर उन्होंने कोई हाइलाइट्स क्रिएट किए, दे ऑलरेडी डूइंग इट। आई मेक यूज ऑफ द डिस्कॉर्ड एज मच एज यू गाइस। वी आर लाइक क्लोज टू आई थिंक 18K फैमिली राइट नाउ here on Discord. तो आप लोग please make use of this Discord, and we'll probably एक self promotion channel create कर देंगे जिसमें a lot of streamers, a lot of streamers who are maybe also new, if they want to start, you guys will be able to put in your links and basically let the people know that you guys play or probably stream here. If someone wants is looking for you already, आप लोग को ढूंढ रहा है YouTube पे, it will be a little easier to find you guys. ठीक है? So I think two important points. The rule reminder is very important because regardless हम लोग का काफी एक छोटा रूल बुक है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो कम रूल्स इसलिए हैं बिकॉज वो जो सारे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से और रोल प्ले डेफिनेटली एक ऐसा जॉनर है आई थिंक गेमिंग में जिससे कि मल्टीपल लोगों का ओवर लाइक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है विद स्मॉल मिस्टेक्स. Someone is building some RP towards something and your some mistake could just spoil उनका weeks का progression. So that's the reason we say कि it's a very difficult game to play and there are a lot of things you keep in mind, and that's why इतना एक strict process, and I get so much इतना सारा messages कि इतना time लग रहा है white listing में, and I mean
the whole reason it's all this difficult is because just to create an environment, you guys know कि जो कि मुश्किल है. बाकी हिंदी is also difficult. But I think these are few points. Abhi just if I recall something, I'll connect back. But I think I'll let Lex and then King Rusher can also cover thoda cop या crim side के points also. But I think Lex, if you want to talk next. Okay, hitting some hard facts right now. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं सर्वर में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब फूल नहीं बरसेंगे, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. कुछ ऐसी चीज़ें अ लॉट ऑफ आरपी प्लेयर्स आर डूइंग राइट नाउ इन द सर्वर की अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू आर गोइंग बैक एंड बीइंग बायस्ड. बायस्ड मतलब आप लोग कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो कुछ लोगों को, कुछ आरपी प्लेयर्स को सर्वर में, या किसी एक टाइप का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे रहे हो कुछ आरपी प्लेयर्स को सर्वर में, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आप लोगों को पता है कि वो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं. पिछले एक हफ्ते में मैंने पर्सनली आई थिंक मोर देन आई हैव परमानेंटली बैंड 8 people, around 8 people in this particular case. Big request, do not do it. I think there is a window of about 4 hours, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो 4 घंटे की विंडो कौन सी है जहां पे कोई एक स्टाफ मेंबर भी नहीं होता स्पेक करने के लिए सर्वर में. अदरवाइज कांस्टेंट स्पेकिंग चल रही होती है सर्वर में. मत करना, मत कर दो, बंद कर दो. मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोगों को बैन करते हुए मुझे. यू विल बी बैंड द नेक्स्ट टाइम. एक और चीज, द सेकंड थिंग इज you guys have started forcing RP. This was not expected from a community with such experienced role players. And the big part is that नए जो रोल प्लेयर्स है ना, उनका रोल प्ले एकदम से चल रहा है. दे आर नॉट डूइंग दिस. जो एक्सपीरियंस रोल प्लेयर्स हैं, दे आर फोर्सिंग आरपी नोइंग कि अच्छा this way we will not be breaking a rule, let's try and force RP. तुम लोग अगर literally मैं बता रहा हूं, if you guys really think that we guys are sitting here and we guys are idiots and we don't notice it, you guys are wrong. We just let it go, and I am telling you now that we will not be letting it go from now. मत सोचना है बिल्कुल भी कि तुम किसी के ऊपर फोर्स आरपी करोगे या किसी के ऊपर कैसी भी आरपी करोगे. वो इट इज अलाउड. One thing that I noticed lately, and someone said this to me as well, was there is too much toxicity happening in the server, where कोई बात करते तो सीधा मुंह से माँ बहन निकलती है. When you are around your own group of people, जब आप वो कर रहे हो, within that circumstances, it is fine. Otherwise, it is not fine. Keep toxicity to yourself. आपको गालियां देनी है, आप अपने ग्रुप और फ्रेंड सर्कल तक रखो, वो बाहर मत फैलाओ unnecessarily जब तक it is not required. This is one request that I am doing right now. अगर कल से कुछ हुआ तो फिर obviously actions will be taken. There are a lot of streamers, there are a lot of family friendly streamers in the server as well. If अगर कोई आपको बोल रहा है लोकल ओसी में कि वो गालियों से कंफर्टेबल नहीं है, try and do RP without abusing. That is something that I would expect. आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट रोल प्लेयर्स हैं, काफी लोग हमारी कम्युनिटी में, and I'm sure you will be able to find out ways to insult the other person without abusing them as well. तो do that, try that out. कुछ नया भी हो जाएगा, ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिलेगा कि बिना गालियों के कैसे हो रही है आरपी. ठीक है, तो प्लीज डू दैट. One last thing that I would like to say, there is
a lot of low effort RP that's happening. लोगों को RP, they like it. I don't know what they're like. They are probably, for some reason, they want it served to be them on a silver platter. That's not gonna happen. This is a role play server. This is a whitelisted role play server. ठीक है, आप आरपी अच्छी करोगे, आरपी में मेहनत करोगे, आपको आरपी मिलेगी उल्टी. आप सपोर्टिव आरपी दोगे, आपको सपोर्टिव आरपी वापस मिलेगी. इट्स 2 ways, इट्स नॉट 1 way. लो एफर्ट रोल प्ले का मैं एक एग्जांपल देता हूं. पता है कि अपार्टमेंट से कोई ना कोई बाहर निकलेगा तो अपार्टमेंट के बाहर बैठ जाते हैं, या रेंटल के बाहर बैठ जाते हैं, हॉस्टेज बना लेंगे. वेरी इजी टू डू दिस. लेकिन तुम लोग कभी ये नहीं सोचते कि यार, एक फॉर एग्जांपल बंदा अगर पहली बार ही आया है आरपी करने, अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही हॉस्टेज बन जाता. क्या एक्सपीरियंस है? आई मीन, सच, कम ऑन, यू गाइस आर बेटर देन दैट. कुछ ढंग की आरपी कर लो. लो एफर्ट आरपी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं. कुछ लोग ट्राई हार्ड कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जिनको जो कर रहा है वो उनको पता है. फास्ट प्रोग्रेशन हो रही है, ट्राई हार्डिंग हो रही है, विन चाहिए. ये पॉइंट्स जो हैं, ये बहुत टाइम से सर्वर्स में चलते आ रहे हैं. अब दिस इज कंसिडर दिस वन first and final warning that it will not be done. I am not going to take this, and no one in the staff is going to accept it starting tomorrow onwards. People are saying that उसको सेफ जोन कर दो. नहीं BLTR गेमर, उसको सेफ जोन नहीं करना है. There is a reason behind it. वो सेफ जोन नहीं होता है. हम रूल्स डालेंगे, जरूरी है क्या वो? आप लोग अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते क्या आरपी का? हमारा रूल डाल के आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना उसके अंदर, वो ज्यादा जरूरी है? वो मेरे को टाइम भी नहीं लगेगा, मैं कर भी दूंगा. मैं ऐसा कर दूंगा कि अपार्टमेंट के 30-50 मीटर के अंदर कोई किसी को कफ नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा मजा आएगा. कोई सेंस नहीं बनता ना उस चीज का. मैं करना ही नहीं चाहता हूँ. Rashad, do you want to add anything from a cop or crim perspective, bro? Oh, I have a lot to say. Pehle, like, you Yeah, finish bro. it, then and we'll probably No, start with the I cop. am done. You start your stuff. Right, मुझे कुछ कुछ आता है, points, so I'll say it yeah, later on. कुछ हाँ. points जैसे लेक्स ने बताया, I would like to elaborate a little. जैसे कि low effort हो गया. People are trying to force जो ज़बरदस्ती RP करवाना और वो सब is like very evident. I know it's not a rule break, but then it's very evident, clearly दिखता है कि what you are trying to do. Or regarding low effort, not accepting a win, I mean not accepting a lose basically, या फिर ऐसा हो गया कि जैसे कि you are trying to speak a little loud, या फिर जैसे कि loud voice से या फिर उसको situation को handle करना try कर रहे हो. बेसिकली एक पावर गेमिंग रूल्स भी हैं. सो सर्वर रूल्स थोड़े से एक बार आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो थ्रू इट, बिकॉज देर आर अ लिटिल छोटे छोटे रूल्स जो रूल बुक्स में मिसिंग भी नहीं है, इट्स देयर, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता. जैसे कि कुछ हो गया, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता हाउ मच इज़ द लिमिट, कि क्रिम लिमिट क्या है या फिर कॉप लिमिट क्या है. इवन मैनी ऑफ द कॉप्स, जिन लोगों को बोला गया है कि सिचुएशन पे कितने लिमिट्स हैं, किस टाइप की सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी है, बट देन आई एग्री कुछ न्यू कॉप्स आ रहे हैं, न्यू डिपार्टमेंट में कॉप्स आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, तो वी गिव देम अ लिटिल बेटर पोजीशन, बट देन यू हैव टू स्टिल गो थ्रू द SOPs एंड ऑल, ताकि आप लोग प्रॉपर ये सर्वर के रूल्स वगैरह भी फॉलो करें. ऑल्सो वन मोर थिंग, I'm missing one thing that was very important. I'll let you know, Lex. You continue, then मैं बताता हूँ. Yeah, I think I'll take. I think what हाँ, please. एक point था जो बहुत important, जो I think Lex ने बोला about being काफी सारे लोग हैं जो I mean what we say family friendly, या फिर जिसको हम overall कहते हैं streamer friendly, मतलब सर्वर का होना. I think it's आप know your audience वाली चीज है. आप देखो आपके आसपास कौन खड़ा है. इफ यू फील कि वो लोग कंफर्टेबल हैं
उस टाइप की लैंग्वेज से आप करो, नो इश्यूज, डेफिनेटली इट्स अ ग्रोन अप सर्वर, नो इश्यू। बट थोड़ा रीड करो अपने ऑडियंस को आसपास, समझ रहे हो, उसमें एक कंसेंट इन्वॉल्व होना चाहिए थोड़ा, कि अगर कोई ऐसा है जो शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या शायद अगर थोड़ा सा फोकस ऑन दैट टू अ लिटिल, आई वुड से अ लिटिल, बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है। डेफिनेटली जैसे आप लोग कह रहे हो कि देर इज वहां पे एक लिमिट होता है विच यू कैन एडजस्ट टू, जितना सेम आप किसी के साथ मजाक कर सकते हो, यू नो, दे ऑल्सो वुड हैव द सेम लेवल ऑफ, कि वो भी आपके साथ उस लेवल का एक मजाक कर सकते हैं। Considering that, when we say कि server streamer friendly, we are not saying we are banning abusive language, we are saying कि आप थोड़ा अपना ऑडियंस को रीड करो आसपास कि कितने लोग खड़े हैं, कौन खड़े हैं, उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो शायद अवॉइड करता है, या अगर उसकी गलती नहीं है उस सिचुएशन में, उसको आई थिंक वो एक चीज है जिसको किया जा सकता है, थोड़ा सा वर्कआउट। देन एक और पॉइंट मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगा, इज पर्सनल टू मी, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज, एंड जो अभी अन्ना ने भी मेंशन किया कि ये द आइडिया बिहाइंड वीएलटी रोल प्ले वाज टू गिव अ कस्टम इन्वायरमेंट टू यू गाइज। व्हेन आई से कस्टम इन्वायरमेंट, जो चीज हम लोग डिफरेंटली करने की कोशिश कर रहे थे वो ये था कि रिगार्डलेस ऑफ, अगर आपके कैरेक्टर का स्टोरी लाइन चल रहा है, लेट्स से योर कैरेक्टर इज अ साउंड इंजीनियर, हम लोग, और अगर आप प्रोग्रेस करते हो, यू गिव टाइम एंड यू प्रोग्रेस, विल ट्राई टू फाइंड अ वे कि कोई एक ऐसा सर्वर के अंदर मैकेनिक्स है जिसमें कि आपको उसी स्टोरी लाइन को या अपनी बैक स्टोरी को फॉलो करके कुछ बन, मतलब कुछ आगे का आपके लिए स्टोरी फॉरवर्ड बन पाए, रिगार्डलेस ऑफ द वे। आई थिंक पास में मैंने भी किया है वो, जहाँ पे ऐसा होता था कि एक कोई बिजनेस आया एंड देन आप लोगों को अपना स्टोरी लाइन या अपना बैक स्टोरी या अपने कैरेक्टर का ट्रेट्स को चेंज करके उस बिजनेस के लिए फॉलो करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि that will be an asset in the server. अभी we are not restricting on assets. Definitely अभी in the meantime, अभी जो भी हम लोगों का टाइम प्रोटेक्शन और ऑप्टिमाइजेशन में गया है, उस वजह से थोड़ा सा वो प्रोसेस स्लो हुआ है। एंड आप लोगों का, बहुत लोगों का मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी आता है जहाँ पे आई नो कि यू गाइज हैव अमेजिंग आइडियाज अबाउट a lot of new businesses, new RP mechanics in the server. I mean, since this is a larger audience, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि none ideas are being not considered. सारे ideas are in consideration. थोड़ा टाइम लग रहा है just because जो optimization process जा रहा था, but all ideas will be there because पूरा idea behind the server was to create a more immersive experiences, जो तभी हो पाएगा obviously कि when we'll add and I think हमने कुछ चीजों को custom add करके prove किया भी है। It's just I think अभी on our plate there was few more important things, but I definitely would say कि जो भी whoever is progressing with me or anyone in the server for any RP जो उनके character को, and they're showing good progression for those custom stuff, trust me, those things will come. ठीक है, so do not lose hope. Time is one thing जो you guys know that limited development team anywhere. I mean, even if we are like have 20 people right now, we would have 30 requests running at that time. तो ऐसा नहीं है कि it's because of bandwidth, it's because of the amount of people will always have, उससे ज्यादा ही requests रहेंगी वो, it's a truth. तो just थोड़ा आप लोग patience रखो उसमें. I'm just saying कि all those ideas will be here. ठीक है, let's Rashad. Yeah, I have some points. Regarding rules, जैसे कि we have a very एक stated rule है rule book में कि pillbox situation and MRPD situations. So that rule says कि अगर आप pillbox लाए जाते हो तो आपका वहाँ पे situation end हो जाता है, like you cannot break free from there. बिकॉज कॉप्स के लिए ये रखा गया है, बिकॉज कॉप्स को दूसरी सिचुएशंस भी ऑनगोइंग एक के बाद एक होती रहती है, सो दे कैन नॉट कीप ऑन चेजिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब पिल बॉक्स लाते हैं वो लोग,
तो उसके बाद वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉपरेट एंड देन आगे का जो आरपी है वो एंजॉय करने का लाइक दोनों साइड से होना चाहिए ये चीज़. इवन कॉप को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए एंड द गाय शुड बी कोऑपरेटिव एज वेल एंड इट शुड बी मोर सपोर्टिव बोथ द साइड्स. ये रूल इसलिए लाया गया कि वी यूज टू चेज 3 to 4 कार्ड्स एंड देन वी ब्रिंग यू टू पिल बॉक्स एंड देन यू ट्राई टू एस्केप अगेन. सो ये कॉप के लिए बहुत सिचुएशन होती है. तो दूसरी सिचुएशंस में कॉप कभी कभी टाइम नहीं दे पाते बिकॉज देर आर नॉट इनफ कॉप्स कुछ टाइम पे. सो ये एक रूल है जो काफ़ी मेजॉरिटी पीपल मिस कर रहे हैं कि आप रूल बुक में देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर बॉट टू पिल बॉक्स द सिचुएशन कम्स टू एन एंड. सो ये रूल प्लीज़ आप लोग गो थ्रू करो. वन मोर थिंग, वॉइस प्रॉक्सिमिटी आई सी बहुत यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग आर अनअवेयर ऑफ इट. जैसे कि वॉइस प्रॉक्सिमिटी होती है आपकी शाउटिंग रेंज जो है, काफ़ी क्राउडेड प्लेसेस में लोग नहीं देखते हैं कि उनका लाइक माइक कौन से सेटिंग्स पे सेट है. एंड दे और ऑल्सो वॉइस प्रॉक्सिमिटी के साथ एक बार आप लोग चेक करो लाइक व्हेनेवर यू आरपी विद समवन और यू नो कि वो स्ट्रीमर है या कुछ है, तो जस्ट एक बार जस्ट फॉर अ चेक आप जाकर एक बार सुनो कि हाउ लाउड इज़ योर माइक, हाउ लाउड इज़ नॉट योर माइक, वो सब चेक करो, सेटिंग करो. एंड देन वॉइस प्रॉक्सिमिटी बेसिकली वो चीज़ क्राउडेड प्लेसेस में प्लीज़ ध्यान रखो बिकॉज एवरीवनस मिसिंग इट. और कुछ लोग होते हैं जो एक प्लेस पे खड़े होते हैं और उनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है विच इज़ अ लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग टू अदर आरपी प्लेयर्स एज वेल. तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखो. एंड वेन एवर यू अब्यूज़ प्लीज़ वॉइस प्रॉक्सिमिटी चेक करो. आई एम नॉट सेइंग टू अब्यूज़ बट अब्यूजिव भी बहुत कम होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक आई हैव सीन बिकॉज काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि यू पास बाय समवन एंड यू हियर वेरी अब्सर्ड अब्यूज़ एंड ऑल जो दैट वो एक्सपीरियंस ख़राब करता है. अगर आप लोग अंदर कर रहे हो, यू गाइज आर फाइन विद इट, वॉइस प्रॉक्सिमिटी कम करो एंड यू गाइज डू वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट टू डू. बट प्लीज़ डू नॉट शाउट ऑन दैट. लाइक वो चीज़ें दूसरों तक नहीं जानी चाहिए इफ इट इज़ सपोज टू बी अंडर यू गाइज. एंड वन मोर थिंग, एस्केपिंग सिचुएशंस. काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे यार जल्दी कर दो मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ये सब. सो दिस इज़ आरपी, यू गाइज हैव टू टेक अ लिटिल टाइम आउट ऑफ इट. उसके लिए टाइम निकाल के लाना चाहिए. और अगर वेरी सीरियस है तो वी गेट इट, बट एवरी टाइम यू आर लाइक ओ यू गॉट अ लॉस एंड यू वांना एग्जिट द सिचुएशन रियल क्विक, तो जल्दी कर दो. तो इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गिविंग सपोर्टिव टू अदर गाइज बिकॉज वो लोग आपसे ट्राई कर रहे हैं बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम आरपी. वन मोर पॉइंट, कैरेक्टर ब्रेकिंग. आई हैव सीन अ लॉट. काफ़ी लोग बोल देते हैं जो आरपी रिलेटेड नहीं होता. फॉर एग्जांपल लाइक कैरेक्टर ब्रेकिंग, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मेरा वैलो में ये है, मेरा वैलो में वो है, ये सब इट्स लाइक अ लिटिल ओसी स्टफ. यू प्रॉपरली आरपी इट आउट एंड देन डू इट, अलग बात है. बट देन उसको एक एक्सक्यूज़ देना, या जैसे कि कोई सिचुएशन होगी, यू लाइक मेरा सर फट, टू एस्केप द सिनेरियो सब भी. एंड कैरेक्टर ब्रेकिंग कुछ वर्ड्स हैं जो वी डोंट यूज, आई एम नॉट रिमेंबरिंग अभी, बट वो याद आता है तो आई विल प्रॉब्ली एड्रेस यू गाइज और विल प्रॉब्ली टेल यू गाइज कि कुछ वर्ड्स जो इन आरपी वी वुड नॉट लाइक पीपल टू यूज इट. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Basically, voice proximity and the pillbox rule is very important. Please go through it once because I've seen a lot of this happening. Yep, Lex, you can go ahead. Yeah, I wanted to add one thing that people with two characters, if you think that you guys are not being noticed, you guys are being noticed. It's just that we didn't say anything until now. And when I say two characters, obviously, one crim and one cop. Literally, तुम लोगों को लगता है हम नहीं देख रहे हैं, but तुम लोग ये नहीं समझते कि हम अपने आप को रोक रहे होते हैं. And this is where that stops. कि आज हमने दे दिया है, बोल दिया, बता दिया है कि अब नहीं रुका जाएगा. बिकॉज अगर ऐसे ही ग्रो करते रहे इस तरीके से और इसी तरीके से आरपी चलती रही और आप लोग वही करते रहे जो आप लोगों का मन कर रहा है, तो हो गया. और वो नहीं करना है. The intention is to not bring a wipe in the next 1 month or 2 months. जिस हिसाब से आप चल रहे हो वो लेके आना पड़ेगा. The intention is to have a long
good season. उसके बाद then we get another massive and a bigger season. बाकी so just letting you know that ये जो चल रहा है ना कि दो कैरेक्टर्स वाला, एक कॉप और एक क्रिम, और मैं अपने कॉप से जाके किसी और के क्रिम को प्रोवोक कर दूं और किम से जाके आके कॉप को प्रोवोक कर दूं, और ये जो तुम खिचड़ी मचाते रहते हो ना, वी नोटिस इट. इट्स नॉट लाइक कि इट्स नॉट नोटिस्ड. बस अभी कुछ बोला नहीं गया है आज से पहले, और आज पहली और आखिरी बारी बोला जाएगा. इसके बाद नहीं बोला जाएगा. इसके बाद WFS ज्वाइन करना सीधा. Yeah, we've been receiving a lot of this cop and crim wala, do characters wala issues. Yeah, we see people coming on duty, people switching. Agar like there are 4 people of the same group, jo they are going for a robbery, so other 4 are going for cop. और ये सब अगर if we see it, right, so इसके बाद तो सीधा we'll just limit your character slot and probably ban you for a long time. हाँ, So, मतलब उसके बाद co-op we'll- RP तो you guys have to still forget it. Like you'll have to choose a way. कि either you wanna do we'll invite you to WFS. we'll ask you to delete one of your characters. चूज करना फिर वहां पे बैठ के कौन सा खेलना है कौन सा नहीं खेलना है. Either do justice to both. If you're not able to do justice to both, do justice to one. That is all that I'm asking for. अभी क्या हो रहा है, दोनों को नहीं कर पा रहे हो, और सर्वर को तो कर ही नहीं पा रहे हो. One more thing that I wanted to say was just slipped out of my mind. Alex, do you want to add that Flow में. random हाँ जी. looting वाला भी ऐड कर दो. अच्छा हाँ, एक नई चीज मेरे को सुनने को मिली, दैट पीपल आर बीइंग रैंडमली लूटेड. वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे था कि कोई स्टाफ स्पेक नहीं कर रहा था, और उस बंदे का हैक्स नहीं मिला, नहीं तो वो बंदा परमा चला जाता. आई हैव ऑलरेडी डन दैट रैंडम लूटिंग के लिए. मैं आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक 5-6 लोग परमा बैन हुए, और अभी भी चल रहा है. The surprising part is, the shocking part is that, not surprising rather, कि अभी भी चल रहा है वो. अगर आप लोगों को चल रहा है कि हो रहा है, करते हो, कर रहे, चल जाएगा, हम बच जाएंगे, नहीं बचोगे, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे. Oh, one big thing that I wanted to say was वेटिंग फॉर सपोर्ट में जैसे मैं किसी को बुलाता हूं ना, मेरे को ये आता है कि यार वो भी तो ये करता है, या ये भी तो वो करता है, या मेरे को आज क्यों बुलाया, वो भी तो ये करता है. ओके, देयर आर 2 थिंग्स दैट द स्टाफ कैन एक्ट अपॉन. वन इज टिकट्स, वन इज व्हाट वी स्पेक. ये होता है रफली 50 to 60% ऑफ व्हाट हैपेंस इन द सर्वर. 40% जो होता है ना, वो अभी भी बाहर रह जाता है, जो हम नहीं कर पाते और नहीं देख पाते, कभी नहीं हो पाता वो. You as whitelisted players, it is your duty to report. क्योंकि अगर आज आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो कल वो बंदा 4 बारी और 5 लोगों के साथ वो हरकत करेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. मुझे पता है तुम लोग सोचते हो यार नहीं क्यों रिपोर्ट करें, ये वो फलाना ढमकाना, ऐसा वैसा. देन जब आप लोगों के साथ होगा तो फिर कल को ये मत बोलना कि यार हमारे साथ हो गया. आप लोगों के साथ भी तभी होगा बिकॉज you had let go of someone who you saw doing it and then didn't report. हम भी पहली बारी यूजुअली अगर कोई माइनर सी चीज होती है और यार अगर कोई बंदा आके सपोर्ट में आके अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता ना, तो हम भी जाने देते हैं, हम इतना ज्यादा वो नहीं करते. बट इफ इट कीप्स ऑन हैपनिंग, रिपीटिंग, एंड वी हैव गिवन मल्टीपल वार्निंग्स, दैट्स व्हेन वी शुड हैव अ सिस्टम ऑफ anonymous reports. It is anonymous, brother. If you raise a report, raise a ticket, we don't tell the person कि इस बंदे ने आपके लिए टिकट रेज करी है. We never do that. लोग अज्यूम करके बैठ जाते हैं, वो उनकी हेडेक है, उनको मैं नहीं रोक सकता यार, जो अज्यूम करके बैठ जाते हैं. एंड अज्यूम का तो है ही ट्रेडिशन कि हाँ उसने रेज करा होगा या इसने रेज करा होगा, तो doesn't make sense. रैंडम लूटिंग बंद कर दो, as T-Bone said. Very stupid. Supportive RP, please start doing that. Just because lawyers were not being supported in RP, there are no lawyers in the city. We started the DOJ with about 10 active people, 10 active lawyers. DOJ में
DA, जज, पैरालीगल्स ये सब थे, बट यू guys आर नॉट प्रोवाइडिंग सपोर्ट आरपी. ये वीजल न्यूज की आरपी जो है वो आप लोग डेड कर देते हो कि हम क्यों दें यार पैसे, हम क्यों दें वीजल न्यूज को पैसे अपनी ऐड दिखाने के लिए. अबे सपोर्टिव दे दो भाई, तभी मिलेगी फ्यूचर में कभी जिंदगी में. तो प्लीज स्टार्ट गिविंग सपोर्टिव आरपी एंड देन एक्सपेक्ट आरपी फ्रॉम अदर्स. नहीं तो फिर तो मैं क्या ही बोलूं, अगर आप सपोर्टिव आरपी नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कल फंसोगे जिसमें मेरे को या किसी और स्टाफ मेंबर को आपको बैन करना पड़ जाएगा, ये तो मुझे पता है. एक पॉइंट मेरा था. हाँ जी बोलो. लाइक इसका रूल है कि नहीं, आई वांट अ क्लैरिफिकेशन बिफोर आई लाइक पॉइंट इट आउट. सो कोई मर जाता ना, मैंने काफी नोटिस किया, आई वोंट नेम एनीवन स्पेसिफिकली, बट इफ समवन इज डेड, वो पिल बॉक्स में आके ठीक होता है, उसके बाद इमीडिएटली विदाउट एनी प्रोग्रेशन मैंने काफी लोगों का देखा है, दे गेट इनटू द ट्रैक ऑफ कि अब रिवेंज लेना है या जो भी हुआ था उस सिचुएशन को वापस से चले जाते हैं विदाउट एनी प्रोग्रेशन. लाइक हाउ, एक आप मरे हो यार, अभी मरे हो, एंड 2 मिनट बाद आप अपने दोस्त को बुला के गाड़ी से जा रहे हो उसको पकड़ उठाने के लिए. लाइक यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस. वेरी ग्रेट पॉइंट. बहुत लोग, मतलब यार आप मरे हो, आपको कैसे याद है? लाइक थिंक. ग्रेट पॉइंट. तो आई मीन है ये वो रूल हाँ में एग्जैक्टली है, वो रूल में भी है. मल्टीपल रूल्स हैं. सो आई से अगर डायरेक्टली भी जा रहे हो आप वहां पे, अगर आप पे एनएलआर नहीं है, डायरेक्टली भी जा रहे हो, आई से थोड़ा लो एफर्ट मत करो आप लोग, थोड़ा इंजरी आरपी दो. आई मीन अगेन ईएमएस बहुत हेल्प करती है, इट्स जस्ट देयर. बहुत लोगों के और लोगों को रोल प्ले को सपोर्ट करने के लिए वो लोग वहां उस एक बिल्डिंग के अंदर खड़े रहते हैं. तो बस ये है कि आई मीन आप लोग, वही जो बात है, ओवरऑल इट्स काउंटर आरपी. अगर आप दोगे नहीं तो काफी सारे रोल प्लेयर्स को मिलेगा नहीं, जो कि शायद आप लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर एक ट्रैक ऑफ रोल प्ले सेलेक्ट करके आते हैं. और हर सिचुएशन खुद से नहीं हैंडल होती है. हर सिचुएशन में आई थिंक जितने कनेक्शंस आप इन्वॉल्व करोगे, आई थिंक और इनरिच करते हैं. आई थिंक रोल प्ले, द ब्यूटी ऑफ रोल प्ले इज कि वो जितना स्लोली प्रोग्रेस किया जाए ना, इट्स मोर एंजॉयड. आई थिंक इट्स मोर बेटर, नॉट जस्ट टू योरसेल्फ, फॉर एवरीवन. एंड वो है इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीवन इज ट्राइंग टू से. यस, लाइक यू कैन आस्क क्या हुआ था ये वो, इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग वन गाय एंड जस्ट जंपिंग ऑन टू दैट. एक मेरा पॉइंट था फॉर द क्रिएटर्स. अगेन आई डोंट नो वेदर इट्स worth it or not, but I'll let it out. I know a lot of RP players in the server are new, and I know सबका अपना अपना एक attachment है अपनी audience के साथ. Those who have been doing RP from a long time, I know this is something that cannot be totally controlled, but it's a request कि for those who are doing RP for the first time, you have a good audience. You know you have a very good audience who are really attached to you. कोई भी situation होता है in RP, you educate your audience. See, as a creator, even I do a bit of content creation as a passion. आप अपने ऑडियंस को थोड़ा सा एडुकेट करें. रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑडियंस को थोड़ा सा एडुकेट करें कि आरपी की चीज़ आरपी में है. एक दिन अगर किसी ने आपको किडनैप कर लिया तो आप अगले दिन नहीं, आप उसको एक हफ्ते बाद भी जाके कोई रिवेंज ले सकते हो, बट अगले मतलब इमीडिएट यू डोंट हैव टू गिव हेट एंड ऑल. आई नो दिस कैनॉट बी कंट्रोल्ड, बट इट्स जस्ट दैट कि फॉर एनीवन हु इज डूइंग आरपी फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज ट्राई टू एडुकेट योर ऑडियंस अ बिट. It will help reduce what is going out of hands, but वही है कि it's just a matter of time कि सब लोगों को थोड़ा आरपी के बारे में पता चल जाएगा. A lot of people don't know a lot of rules, even I don't know a lot of rules, but वही है कि जैसे जैसे आरपी करेंगे आप भी अपने ऑडियंस को एडुकेट करें, आरपी की चीज़ों को आरपी में रखें, नॉट लेट इट आउट ओसी कि भाई सीधा चल दिए दूसरे को उठाने के लिए कि भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. Yeah, this is pretty much it from my end. PTS I think is bring every second. हाँ तो guys मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ and then I'll मेरे को एक दो चीजें मैं बहुत क्विकली बोलना चाहता हूँ. हाँ प्लीज. कैरेक्टर ब्रेकिंग ओसी का यूज सही से कर लो.
अगली बारी मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा किसी से कि ओसी ढंग से यूज कर लेना, मैं किक दे दूंगा सर्वर से. One big thing that this is something which is pointed out by Noah negative. Create new RP. You guys are doing the same thing again and again, every single server. Create new RP. Do not stick with the old. We are trying to do everything out of box here. Two people that I would like to point out who came to us with something new and we made it happen for them. One was PP, Momos ki stall. He wanted it. He got a custom Momo stall. Everyone loved that RP. We loved that RP. फिर PP ने खुद रख दिया उसके ऊपर. And he lost it. And he lost it. तो अब वो किसी, it is open for someone else to get it if someone comes up with a good idea. Second, Jimmy, no one has done ammunition store RP. He came to us with an idea. We are making it happen and it should be there in the server in a couple of days. I know Jimmy has been very pissed off with me and Lightway because he has reached out to us a lot of times. Please, Lado. But because of server optimizations and arcade as well. Yes, sorry, one more person, arcade as well. These are some things that which were really amazing. क्या कहते हैं? Fuck, one big thing. Yeah. We guys have been very busy with DDoS and server protection. The server at this point of time does not go down because of DDoS. It does not. Let me be very clear. Stop telling your chats that it's DDoS. It is not DDoS. We are not getting affected by DDoS anymore. The server times out right now because of server optimization. I'm being very honest with you, which we are also working on. And a complete server from scratch is being made in parallel, and that will be up soon. And मैं अभी तक टेस्ट में जाके उसको ट्राई आउट कर चुका हूँ, and it gives you a different kind of smoothness altogether. So I'm guessing कि once it's fully prepared, it will be way better than what we have right now. Baki, let's move to PTS. Okay. Thank you, everyone. Oh, sorry. Amazing. One more thing. One last thing. Asset मांगना बंद कर दो सबके सब. सिर्फ asset से RP नहीं होती है. We have seen those days where I have, as a viewer, seen a lot of the RP players which are doing RP right now in the server doing RP without an asset. So RP के लिए asset की जरूरत नहीं होती है. RP के लिए लोगों की अपनी बकवास की keeping in mind, देखा बकवास बोल रहे हैं. Keeping nice save. This was a good save. अपनी बातों की उसकी जरूरत होती है, एसेट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है. तो प्लीज, and if next time anyone says and anyone points a finger at any of the staff or the management people कि चीजें मैनेजमेंट वालों को ही मिल रही हैं या उन्हीं को मिल रही हैं, उनके दोस्तों को मिल रही हैं या उनके बहनों को मिल रही है, उनके भाइयों को या चाचे के भतीजों को. Fast lane was given to two people who are not streamers, who just come and play for fun. And the reason why it was given to them was because they did great RP. They spent a lot of time in the server. दोनों के अलग अलग proposals आए थे. We kept a proposal in front of them to do it together, and they did it even better. That is why chef और अपना खिलाड़ी, these two people, they're doing it great. तो it's not like कि किसी को अगर कोई चीज जा रही है तो वो इस वजह से जा रही है because वो है, ठीक है, वो जा रही है because it's great and they do it. और अगर किसी ने मेरे से अगली बार ये पूछ लिया कि अन्ना और गोल्डी भाई को ये गाड़ी क्यों दी है या वो गाड़ी क्यों दी है, दूंगा, and it will happen. It is their server. We will give them what they want to do RP. ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड बैंक बैलेंस दे दिया है. They are also doing RP. So stop pointing stupid things out and start focusing on doing good RP so that you can also get something in return. अब PTS पे मूव कर जाते हैं. Nice. As I'll give Lex a break. ठीक है. So
पहला पॉइंट था टाइलर asking the community to not mention any kind of non-YT TOS friendly words. Because many of us are streamers. Definitely मैंने टाइलर अपने जो रूल बुक है उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने ट्विच और मतलब जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मेरे पास टाइम अवेलेबल थे ट्विच एंड यूट्यूब का टर्म्स ऑफ सर्विसेज का देयर इज अ लिंक. आप लोग प्लीज गाइस उसको फॉलो करें बिकॉज ऐसा नहीं है फॉर बिकॉज ऑफ यू समवन एल्स माइट सफर. उसकी स्ट्रीम पे कोई ऐसा वर्ड जो कि शायद नहीं जाना चाहिए, नहीं अलाउड है, प्रॉब्ली वुड नॉट वर्क. मैक आपका जो पॉइंट है, मीन इट्स I don't know, it's wrong, but then it's incomplete, so I cannot talk a little more about it. Please decrease the effect of blackout if we get hurt. We felt no one else has reported it, Swagnik, but हम लोग एक बार और टेस्ट कर लेंगे and अगर ये feedback आता है, so we'll definitely keep that feedback as priority. Yeah, it's अगर already लगेगा on the list. it's already on the With list. me Okay. yesterday as well. I was very annoying. I know. So I get your point. So we'll work on it. These things, they do not take a lot of time. When जब आता है feedback, we can act on these things. एक सेकंड राइडर राइडर व्हाटएवर वी डिसाइड टू वर्क ऑन एक बारी ना वो पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करके साइट में डालते रहे. हाँ प्लीज कंटिन्यू. Hriday says people are looting PD का AR. So PD का AR, अगर if you guys don't know, there is a rule जिसको हम लोग, it's not a particular rule, but it's basically एक ground rule है how cop मतलब criminals and leos interact. उस part के अंदर आता है कि you need to have a very strong role play if in case you are looting a cop, or it can only be done to continue a situation or scenario which is an ongoing one. तो अगर उन सब किसी सिचुएशन के अलावा हो रहा है, अगर आपको डाउट भी है कि ये हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, ओपन a ticket. Either we'll Sorry. educate or we'll take action. तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, तो do not hesitate. एक Alright, ticket इसी में extra. I would like to add up a little. Mhm. जैसे कि you are going for a scenario. For example, Evangelico robbery or bank truck robbery, right? Your main purpose is to loot that, not to loot cops. तो आपका वो main purpose है. So that is not a very strong reason to loot पूरा cop. You can take whatever you really need. Like जैसे कि ammo चाहिए या armor चाहिए या your gun lost a bullet. तो तुम्हें गन चाहिए या गन्स ब्रोकन, तो तुम वो लेते हो. जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ लो, इट्स ओके. बट योर मेन मोटिव जो है वो टू रॉब एवेंजेलिको, नॉट टू रॉब कॉप्स या फिर टू रॉब द बैंक ट्रक. तो अब बैंक ट्रक में वी हैव सेड कि देयर इज अ शूट आउट, राइट? सो उसमें ऐसा नहीं है कि यू फॉरगेट योर मेन मोटिव एंड यू स्टार्ट लूटिंग एवरी कॉप यू सी, ही इज डाउन. सो ये चीज़ें ध्यान रखो. एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तभी लाइक यू कैन टेक ARs एंड ऑल. बाकी वट एवर यू नीड वही चीज़ें लो, वरना यू विल फॉल ऑफ ऑन द रूल एंड देन यू माइट गेट बैन. If somebody, any cop reports or anyone reports the scenario, you can get a ban. Thank Baki you. any other situation leads jo very serious situations, then you loot something, it's all good. एक पॉइंट कोट कर देता हूँ because Mamba also wrote it in I think meeting chat. So with great availability of guns in the server, some of the new role players just shot down anyone in game without giving it a second thought. Moreover, I've come across twice with the same scenario that some people in game do not do fear RP when pointed gun just because they know that they're gonna get alive in the game, which is standing in front of the live audience and a lot of audience. Yeah, I can understand. So it's I mean, I think जितने भी लोग हैं, everyone would agree to it. Fear RP is one of the most basic go-to points जिस पे पूरा role play, I think the पूरा foundation is based. अगर आपको if you मतलब take away your fear of having अपने life का value अगर करना बंद कर दो, तो there is nothing which can be built around in role play. This will just become I mean, I don't know, we just become GTA Online. We just remove fear RP from it
it'll become GT Online pretty much. So considering people should not do it, and I think in a whitelisted community, even though players I know नहीं, अगर किसी से मिस्टेक हो रही है, अगर आप लोग को लग रहा है, educate करो. अगर नहीं हो सकता, please open tickets. I'd be more than happy because this is, I would say, fair RP. अगर tier list में जाएं हम लोग, being crucial कि एक ये rule आना ही चाहिए लोगों को. I think I'll put it on S tier, सबसे ऊपर आएगा ये. तो अगर anyone is doing this, the moment a gun is pointed, just follow. I think it's very simple. And you do the same, other person should do the same. So very simple rule, honestly, go to. So thank you, Mamba. Anyone who's not doing it, the other person, we motivate them to open a ticket. आप लोग करो. अगर हम नहीं होगा, I always say कि waiting for support or tickets is also not about banning. A lot of times जहाँ हम लोग को लगेगा कि honestly person didn't know, वैसे this is an exception of a rule in that case. But a lot of other situations हम लोग ट्राई करते हैं एजुकेट करने का पहले, वार्न करने का, एंड वो सब बाद में आती हैं सिचुएशंस. Okay, moving on to the next one. Means some gang role players are trying to initiate gang wars just for getting again force RP. So you do not have to force a RP या progress it a little faster just to reach to a point जो आप चाहते थे scenario. So the funny thing about roleplay is कि आपके mind में एक storyline है and then someone has another storyline. जब collide करती है, multiple new storylines form. Just wait for the beauty of it कि होने दो उस चीज को organically rather than मतलब you sticking with the idea in your mind कि नहीं यही होना चाहिए and और मतलब deviate ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता. I mean this is how it should go. ऐसा even real life में भी नहीं होता है. तो Sahil says, I think we should, and that is true. A lot of people, when you guys are saying 200 player shots, trust me, it hurts me, Anna, Leg, everyone, whole management here to see you guys sitting in queue and आप लोग अंदर आके नहीं खेल पा रहे हो हम लोगों के साथ. It hurts a lot. But problem ये है guys कि 5M servers optimization के बिना ऐसा नहीं है. मतलब अगर अभी 120 खेल पा रहे हैं सही से, me getting those 60 people in, it will be a problem for the whole 200. तो वो it will not be a good trade honestly. तो regardless कि हम लोग we are a little, अभी हम लोग के hands tied हैं इस पे, but we are constantly working. जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग stress test करके we are moving 10 slots करके we are moving up. तो we'll reach there. Trust me, we'll reach there. So I thank you, Sahil, for answering this, not just I think. Then Rashid, I think Dark Horse has a lot of PD related points. Do you wanna take these? Yeah. All right. First one, if people are expecting supportive from PD and we as PDRP players, we accept at least 1 or 2 out 10 times supportive from opposite RP. Yeah, so basically the same thing I said कि आप भी supportive try करो because cops को already बोला गया है कि supportive करो. And if you see any cop RP player who's not behaving properly or you have a problem with that, just open a ticket and we'll take care of it. Also, one more thing, to all the cop RP players, तुम लोग ये मत समझो कि you'll rule break and just you'll get a strike. If that's a OOC server rule break, you'll get a ban. जैसा सबके साथ होता है वो तुम लोगों के साथ भी होगा. And yeah, try to give supportive because we are all here for fun and we are all here to give RP. Yeah, if you see someone tryharding, then that's a different thing. वो आप आके बताओ. We'll take care of it. We as PDRP players see tryharding during chases like changing angle from when. Okay, one more thing. It's a very basic common thing कि you do not pull your vehicle out while you are in a chase or something. आपने गैराज में गाड़ी स्टोर करके रखी है, आप जाओगे वहाँ से गाड़ी निकालोगे and then you go. It's like a little थोड़ा सा less sensible. अगर पहले से बाहर सेटअप है and you take it तो अलग बात है, but then you are in a chase and then you come stop at a garage, then गाड़ी अपनी निकालोगे and then go out. That's a little PG thingy.
So please do not try to do that कि rental से गाड़ी rent कर ली and then you start rushing because you TP a little place दूसरी जगह पे थोड़ा सा and you cannot do that कि जाकर like while in mid chase you have a car, you go rentals and you take a bike and just try to escape. If possible, try to talk to COP-RP players and I positive every COP will react positively and same implies to COP-RP players. Yes, it's the same thing. Supportive try करो. वो लोग भी COP-RP में भी I very selected few. बहुत like we go all processes and every processes. तो या आई मीन आई एग्री 100 बंदों में से 2-3 बंदे अगर ऐसे हो सकते हैं जो मे बी दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर या चीज़ है तो वो तो रिपोर्ट करोगे एंड विल टेक केयर ऑफ इट डोंट वरी वी हैव अ लार्ज टीम पूरा कमांड बाद में विल प्रॉब्ली ब्रिंग जेबी या सबा टू एड्रेस सम पॉइंट्स एज वेल कि उनको जो भी पॉइंट्स है दे कैन कम अप एंड एक्सप्लेन इट Rana, Rana, try to keep it short. I'll give you perms, but try to keep it short if you want to express. और अगर जो point covered हो गए, please do not repeat them. Okay? Rana को perm दे दो. Please, 1 second. Where is he? Can you request? But Yeah, please try to keep it I short. Okay? gave him. Yeah. आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी. लाउड नहीं है ना फर्स्ट ऑफ ऑल? No, it's all good. नहीं सही है. ट्राई टू कीप इट शॉर्ट नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा बता Relax भाई, sure. जल्दी हाँ few things like हाँ जो एड्रेस हो चुका है लाइक हमको ओ से में यह आता है कि प्लीज इग्नोर द शॉट्स यू कैन वी एग्री हमको भी पता है ग्लिच हो रहा है हमारा सामने हो रहा है वी इग्नोर इट बट हमको आ रहा है यू आर आस्किंग टू इग्नोर इट यू कैन वी आर आस्किंग सिंपल थिंग एज अ कॉप आरपी प्लेयर कन्वर्ट दैट इनटू आरपी वी आर नॉट इवन सीजिंग गन्स जिन्होंने आरपी किया है हम गन्स भी नहीं पूछे है नहीं है आरपी करके चले गए उधर से एंड सेकंड थिंग एट टाइम्स ये होता है रशर ऑलरेडी एड्रेस्ड लाइक सीधा से जाते हैं रेंटल्स उनका खुद की गाड़ी सेव छोड़ो खुद की गाड़ी जाके पार्क कर देते हैं रेंटल्स में सामने और रेंटल से गाड़ी बाहर निकाल के वहां से चेज शुरू करते हैं सो काइंड ऑफ आई एम नॉट आस्किंग एवरी टाइम हमको आरपी दो ठीक है आप ट्राई हार्ड कर लो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट वंस इन 10 टाइम्स हाँ ठीक है लास्ट टाइम हमको आरपी वी गॉट अ सपोर्टिव आरपी ठीक है इस बार हम दे देते हैं सपोर्टिव आरपी जस्ट आस्किंग फॉर इट एंड सो दैट पीडी भी एट टाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते कितने बार सेम थिंग वी नीड टू डू इट एंड वी एट फ्यू पीपल्स माइट नहीं आज मैं सिर्फ हॉस्टेज लेके चेज में नहीं जाऊंगा दैट काइंड ऑफ विल बी स्टॉप्ड सो OC जो slash OC होता ना that's what we are requesting to stop if possible most Russia already addressed while he took few points so that's from my end and PDs को ट्रैफिक स्टॉप पे गोली चला देना ट्रैफिक स्टॉप है सिंपल ट्रैफिक स्टॉप बात करोगे ऑब्वियसली कॉप छोड़ देगा तुम गोली चलोगे दैट विल बी योर योरसेल्फ कॉलिंग फॉर ट्रबल हाँ सो एंड सो गाड़ी हमको दिखी है नंबर प्लेट उससे हमको गोली चली है और एल्स जस्ट यू आर ट्राइंग टू मतलब सामने कॉप के सामने कॉप बेटिंग इन ए वे यू आर डूइंग इट आई वी रिक्वेस्ट दैट टू स्टॉप सो दैट जिसको आरपी करना है वो कहीं और उसको आरपी नहीं मिलता वी हॉस्टेज लेके छोड़ना पड़ता है तो इफ दिस इज व्हाट माय पॉइंट्स आर few things All right. Thanks, Rana. Anything else आपके points जो miss हुए हैं? Done, right? डन वो लास्ट वाला थोड़ा जो वर्ड्स सभी को इम्पैक्ट होते हैं इट्स नॉट थ्रू कॉप बट फॉर ईच एंड एवरी कंटेंट क्रिएटर few All words right. of Okay. yeah So yeah, there are some words जो terms हैं वो TOS break करते हैं so please do not try to use it in server as well ताकि कोई भी RP player या कोई भी creator को problem हो आगे चल के उसकी channel पे या कुछ ऐसा हो ठीक है you Alright, I think sorted. Thanks, Rana. Like you wouldn't think. Yeah. So I think next two are covered. Then please make sure people understand इसका मतलब हर बात पे रोबोट्री आपका I mean डेफिनेटली गन प्ले ओवर रोलेप्ले का पॉइंट है जो भी सिचुएशन गाइस बात करके सॉल्व की जा सकती है उसके लिए आपको शूट करने की जरूरत नहीं है
I think as per I would say जितना भी रोल प्ले मेरे को आता है and lot of seasoned role players जिन्होंने मेरे को सिखाया है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि गन शुड बी लास्ट रिजॉर्ट. जब आपको लगे कि अभी सिचुएशन में देयर इज I mean that's the only option that you have left, और वो भी अगर जरूरी है तो you see consequences, जैसे आप IRL कंपेयर करते हो कि उसका consequences क्या होगा and then you do it. So definitely if someone is doing it arbitrary, it's wrong. अगर आपको लगता है, again I would motivate you to come report. अगर हम obviously अगर उनको नहीं पता होगा, we'll definitely try to educate. Fast progressions, OC gangs, 2 days gang. Okay, fast program again. So इस I think हाँ very important point. I think इससे बहुत सारे आगे के PTS भी cover हो जाएंगे. Guys, we will have I think sometime end of this week we will have a proper gang Discord setup जहाँ पे regularly we will sit with gangs, talk to them about their situation. When we are giving out those gang roles in the Discord, we will talk to all the gangs one by one. I'll personally talk to every gang one by one and understand कि उनका क्या progression है for them to have that gang role. So do not worry about it. ठीक है? Those things will get cleared there. ठीक है? So thank you first of all. Let I give me. Yeah, one more thing. एक second like regarding gangs. अभी there's no things about gang, right? So हम लोगों ने कोई को full permissions या किसी को कोई हुड एरिया या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया. सो ट्राई टू फॉलो 5-man रूल. कोई भी क्यू सिनेरियो ना हो, डू नॉट ट्राई टू ब्रेक इट कि ओह दिस इज़ माय प्लेस, यहाँ पे 10 लोग भी गोली मार सकते हैं या कुछ भी व्हाटएवर. अभी तक देयर इज़ नो ऑफिशियल गैंग्स या नो रूल्स गिवन. सो एटलीस्ट ट्राई करो कि जो बेसिक क्रिम रूल्स है ना वो ही अप्लाई होंगे अभी आप पे. अभी वी हैव नॉट गिवन यू एनी स्पेशल परमिशंस या कुछ भी to break through those rules. Yep, you can go ahead now. Okay. Also, streamers should educate audience regarding not to take. Well, I think. No, go ahead. Yeah. So I think UFO covered. हाँ UFO wait UFO already covered. वही मैं भी बोलने जा रहा था कि Lucy UFO already covered. But thank you. मैं इसमें एक और चीज ऐड करो. या सो इसमें मेरे को एक चीज और ऐड करना था कि see guys, this place is एक फैमिली जैसा एक हम लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अन्ना ने, टीबोन ने, गोल्डी भाई ने और जितने भी क्रिएटर्स हैं सब इतना एफर्ट डाल के इस चीज़ को कर रहे हैं. लाइट एंड लेग्स भाई के बिना ये पॉसिबल नहीं होता. जस्ट वांट टू से कि आप लोगों को सर्वर में कोई भी एनआरपी कोई भी सिचुएशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको लेके टॉक्सिसिटी हो रही है, जो भी हो रही है, आप बात करो. डेव्स, अब जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, लेक्स है, लाइट, एवरीवन इज लिटरली रीचेबल हियर. ऐसा कोई भी नहीं कोई रीचेबल नहीं. आप टिकट रेस कर सकते हो. बट इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल रिक्वेस्ट कि डोंट गो अगेंस्ट द एंटायर थिंग एंड क्रॉस योर लिमिट्स एंड say whatever you want to with regards to the server or the people who are associated with it. Everyone is putting, आपको आइडिया भी नहीं है कि लेक्स, लाइट और जितने भी डेव्स हैं इन लोग कितना अपने एंड से एफर्ट डाल रहे हैं. नो एवरीवन द होल स्टाफ में एवरी सिंगल पर्सन. मैं लाइक आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू पीपल बिकॉज़ आप लोगों का नाम पता है. लाइक यू गाइस आर डूइंग अ जॉब एंड देन यू गाइस आर पुशिंग योरसेल्फ कि ताकि हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और क्रिएटर को. एंड देन इफ यू आर थ्रोइंग मतलब कीचड़ अगर आप उछालते हो फिर इस चीज़ में, तो आई डोंट थिंक, एटलीस्ट आई वुडंट माइंड कि कोई अगर इस चीज़ के लिए बैन होता है कि आप इन सबके मेहनत के ऊपर कोई कीचड़ उछालता है. तो प्लीज़ आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आप निराश हो किसी एक सिचुएशन को लेके, रेज अ टिकट, टॉक इट आउट, बात करो. लेकिन हमें पता है कि कौन स्ट्रीम कर रहा है, कौन स्ट्रीम नहीं कर रहा है, कहाँ क्या बातें करते हो. बट या जस्ट नो वेयर यू नीड टू ड्रॉ द लाइन. एंड वही मतलब लेक्स पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहो इसमें तो. नो आई विल जस्ट से दैट मुझे तो कोई कुछ बोल सकता है तो बोल लो, मुझको तो मैं देख लूंगा. बट सर्वर के बारे में किसी और स्टाफ मेंबर या टीम मेंबर के बारे में गलती से मत बोल देना. आई मीन यू नो इट विल जस्ट टेक मी अ फ्यू क्लिक्स एंड यू आर गॉन. टाटा बाय बाय हो जाएगा. देयर वाज वन पर्सन who broke a rule yesterday. I called him, invited him to support. He started fighting with me in support and then he said that और भी server है खेलने के लिए. And I was like, okay, go, bye.
And now if I show you his DMs, he's probably watching. He's keying and came on my stream right now, and he was like, "Please maaf kar do, please maaf kar do." So I'm just saying that any decision you take it with a cool, calm mind, think, and then take that decision. ऐसे ही किसी पे कुछ भी मत कर देना, because the repercussions might be very, 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 very hard. And not sure if you know or if you remember rather that there is a forum, and on that forum you have actually accepted to the point that if in case you say anything against the server or rant the server or any of the members or even community players associated, we can take legal action against you. And trust me, we can. तो वो बस just keep that in mind. और वो सोच के करना, अगर आप करना का सोच रहे हो तो वो व्यूज के लिए मत करना. थोड़े व्यूज आर नॉट trust me when I say that they're not worth it. Do good RP, that will get you a lot of views. हाँ, नेक्स्ट पीटीएस ले लेते जल्दी से. सॉरी. ओके, कहाँ थे हम लोग? I think Mac, तुम्हारा point cover हो गया. Again, fair RP वाला point, that is definitely one of the core rules. Someone found breaking doing it, definitely come to us with it. हम लोग, we're always there for it. Bring queue priority for COP and EMS. I think already discussion हुआ है with the department leaders. They are constantly, I think the way वो लोग देखते हैं वो इससे देखते हैं. I think duty hours, your dedication, आपका quality of role play, उन सब चीजों को focus करते हैं. And we will be doing it. So COP and EMS, they will be. I think there are already few people that we have done जो हम लोग announce नहीं करते हैं. So there's already some people who have it. But we definitely want to make sure क्योंकि COP और EMS से definitely सबका role play experience enhance होता है. So we definitely will keep doing that. So thank you, Carlo, for bringing that point up. But it's already in works, so do not worry. Kaiser wants to say something. Well, quickly, maybe let's see. If you invite you here. I will not see. Maybe कोई हेलो invite होता. जी हाँ, we गाइड, can hear. क्या हाल है आपके? अरे मैं बढ़िया. तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंड लेट्स. और मेरे को तो अभी सर्वर में 2 दिन हुए हैं एक्चुअली, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि मैं काइंड ऑफ फनी आर भी करता हूँ और लाइक अपने हिसाब से ही बात करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई पॉइंट किसी भी प्लेयर का किसी का भी आरपी के अंदर वो रखता है तो उसको आरपी में ना लिया जाए. एक्चुअली उसको आउट ऑफ आरपी डीएम कर दिया जाए कि यार मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुरी लगनी नहीं चाहिए कि ये आरपी है, ठीक है. और अगर लगती भी है तो उसको आरपी में ना लिया जाए, उसको बाहर से ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए एक्चुअली. तो इस वजह से थोड़ी बहुत कम्युनिटी जो है वो ख़राब हो जाती है मेरे हिसाब से. तो मेरा पॉइंट एक्चुअली ये था. और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप ऐसा ही करोगे, सपोर्टिव आरपी इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा. मैंने थोड़ी सी चीज़ें फील की हैं सर्वर के अंदर, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. आप सपोर्टिव आरपी नहीं दोगे सामने वाले को तो फिर सामने वाले से भी सपोर्टिव आरपी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. फिर वो भी अपना कंटेंट ही निकालेगा और अपनी ईगो सेटिस्फाई करेगा. तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है. आप किसी को सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको सपोर्ट करे. That's all I want to say and thank you so much. Thank you, Kaiser. And definitely, मतलब वो जो point है ना, where अगर in any case अगर आपको लगता है कि कोई point आपको hurt कर गया है, जो Kaiser कहना चाह रहे हैं, I think we are all grown ups. कुछ situations है जो आप लोग directly, face to face DM में बात करके you guys can sort with each other. A lot of times जब आपको लगता है कि communication channel नहीं set up हो पा रहा है, a lot of people अगर उनके friends only DM, you guys want us to set up that communication channel. अगर आप लोगों को you guys just want to have a communication, वो we can help you guys with it. So thank you, I think, for mentioning that. But
आई थिंक अगर हम लोग वो करेंगे ना तो काफी सारी सिचुएशंस आई थिंक हम लोग के मतलब ये सिचुएशंस बिगड़ने से पहले ही काफी हद पहले ही हम लोग आई थिंक उसको कंट्रोल कर पाएंगे. सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच लॉट ऑफ अस नॉट अभी हम लोग नहीं करते हैं, बट मतलब एक समथिंग व्हिच यू गेट ऑफेंडेड आईआरएल एंड देन आप उससे अपने कैरेक्टर को प्रोग्रेस कराओ, दैट्स ब्लरिंग एंड वो खराब करता है ओवरऑल क्वालिटी सबके लिए. तो आई थिंक इट्स बेटर टू सॉर्ट इट आउटसाइड अगर कुछ हुआ. एंड आई थिंक अगर दूसरे पर्सन ने इंटेंशनली नहीं किया होगा तो वो जस्टिफाई कर पाएगा, एंड आई थिंक यू विल फील बेटर आफ्टर हियरिंग हिम से दैट. तो दैट्स डेफिनेटली. थैंक यू केतु. थैंक यू. How to deal with people who remember everything after NLR, then they keep progressing in ARP like person to educate him. I mean, if they're doing it, that is wrong. आपको if there is a way, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपको लग रहा है कि it's a genuine mistake, he's not doing it intentionally. If you wanna reach out and educate, अगर आप करना चाहते हो, feel free, because again, as I said, it's a little welcoming community. काफी सारे लोग नए हैं. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मल्टीपल टाइम्स हो रही है वो गलती, यू वांट अस टू बी इन्वॉल्व इवन फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, अगर आप हम लोग को इन्वॉल्व करना चाहते हो, आप हम लोग को बेशक इन्वॉल्व कीजिए एंड हम लोग एजुकेट करेंगे. वील सी ऑन आवर लेवल आल्सो कि उसको किस तरह से ले सकते हैं. बट दिस इज आई थिंक द बेस्ट वे. अगर आपको लगता है वहां पर कि अनइंटेंशनली हुआ है, रीच आउट आप लोग डीएम्स पे. दैट्स द रीजन. अगर आप लोग ये चीज देख पा रहे हो और जिसने अभी तक नहीं किया, आई वुड सजेस्ट डिस्कॉर्ड पे हम लोगों ने सबके नाम के साथ हम लोगों ने बोला था कि वो अपना इन कैरेक्टर नेम भी अटैच कर ले निकनेम में, सो दैट कि इट्स वेरी इजी टू फाइंड यू. सो लेट्स से अगर इन आरपी में जानता हूँ किसी को एंड आई फाइंड देयर नेम ऑन द लिस्ट निकनेम में, बहुत इजी हो जाता है टू फाइंड देम, टू टॉक टू देम अबाउट समथिंग व्हिच आई वेंट रॉन्ग. उनको अप्रिशिएट भी अगर करना है आरपी अप्रिशिएशन के अंदर, वो भी काफी इजी हो जाता है. सो आई थिंक दैट that will help. So, but come to us for these things. Make a provision to sell PDM cars to other people, not EDM. Zelos, I think थोड़ा और सबको गाड़ी लेने तो दे. मैं वैसे थोड़ा अच्छा ओके. Is he going to like sell each other? Yeah. अच्छा, does he mean okay? Something in work. Or maybe probably some provision to basically sell PDM cars, like second-hand PDM cars, sell it to other people. तनिष्क, आपका जो पॉइंट है अगेन द सेम पॉइंट जो अभी मैंने बोला कि जो हम लोग अभी गैंग डिस्कॉर्ड सेटअप करेंगे, उसका जो प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर के अंदर में काफी सारी ये वाली जो इश्यूज जो आपने मेंशन की है वो वहां पे क्लियर आउट हो जाएगी. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. यू गाइस हैव बीन पेशेंट एंड आई नो अगेन विद यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी टिकट्स कभी कभी थोड़ा 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन टाइम ले लेती हैं, कभी कभी 4-5 days also. तो आई वुड से कि बैंडविड्थ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. बट ये जो चीजें आई थिंक विद लॉट ऑफ जो गैंग प्रोग्रेशन की वजह से आप लोगों के क्वेश्चन है वो हमें तब तक आंसर नहीं होंगे जब तक हम विल नॉट टॉक टू ईच गैंग अबाउट देयर प्रोग्रेशन. एंड अगर हम लोगों के क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे तो वील आंसर you guys, that if you guys would have doubts, we'll answer. If not, people will give them more time until they get a role on the main gang discord. So do not worry about it. So that is done. Okay, please introduce DOC. तो DOC हम लोग ने इनिशियली अभी आई थिंक हम लोगों के पास SOPs रेडी हो गए हैं. And I think we'll very soon send out an application if there's someone who wants to move forward and start setting it up with us. हम लोग very soon will start because system is there. हम लोग पहले चाहते थे कि एक क्रिम टाइमलाइन आ जाए सर्वर के अंदर, एक आर्क आ जाए जिसके अंदर we see a lot of crim activities happening. At that point of time, we probably want to introduce DOC. शायद 1 week लेट चल रहा हूँ मैं अपने उस टाइम के हिसाब से, but that definitely is in the books. The automatic shooting which was I mean, thank you Vasetti for mentioning this, guys. There are few things in any server which is called known bugs.
नोन बग्स ये होती हैं कि वो आपको पता है कि अगर पर्टिकुलरली डन इन अ वे ये चीज होती ही होती है। द मोमेंट आपको पता चल जाता है, अगर एक बार हो रही है दिक्कत नहीं है, अगर बार बार देन इट्स अ प्रॉब्लम एट योर एंड। नोन बग्स हम लोग इसलिए इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं बिकॉज कुछ सम कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उसका, इसलिए वो रिजॉल्व नहीं हुई होती है, इसीलिए उसको वैसे का वैसा छोड़ा गया होता है। कुछ लिमिटेशन होती है उस टाइम, या तो हम लोग की टीम की इस वजह से रुकी होती है। तो द प्रॉब्लम इज कि ये जो शूटिंग वाला है, व्हाट आई हैव सीन इज आई थिंक मेरे को पता चला है द वेज जिससे कि ये ग्लिच होता है रिप्रोड्यूस, एंड आई थिंक आप सब लोग को भी पता चल ही गया होगा कि क्यों हो रहा है ये वाला ग्लिच। जस्ट स्टॉप डूइंग इट, रादर यूजिंग ओसी, कि आप ओसी में लिख रहे हो कि इग्नोर शॉट्स। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू गाइस, no shots will be ignored moving forward, because I think that this is a known bug. If any one of you guys feel कि ये known bug नहीं है, there are multiple ways to reproduce it after the meeting, please open a ticket. Please open a ticket and I'll put a rule reminder for it later. But for now, जितना मेरे को लगता है, there is a particular way जिससे कि ये होता है issue, and I think it's very easy to avoid not doing it. और अगर आप लोग कर दोगे तो वो स्लैश ओसी इग्नोर शॉट्स की सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी, लेकिन जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आई थिंक दैट कवर्स दिस वन। हंटिंग में कोई डेड होता है, ही गेट्स न्यू लाइफ कैरेक्टर कम बैक्स टू हंटिंग साइट, टेक्स मीट्स एंड गो अवे। अगेन शुड नॉट हैपन। सो कोलिन, इफ यू आर सीइंग दिस प्लीज लेट अस नो, हम लोग उन प्लेयर्स को एजुकेट कर देंगे। अगर एजुकेट कर देंगे, if first of all if they don't know about it they should, and educate कर देंगे तो they'll probably might not do it, and if continuous हो रहा है, so every time first call out is always a warning, and then maybe we'll have to move to stricter ways. Okay, I think I'll take 2 more and then I'll pass it on to someone who is there still alive. Okay, so be way more strict on grind roleplay by specking if possible. I've seen multiple occasions where people have joined server 2-3 days ago and they have done illegal things also, what cars as by grinding in 2 days. Okay, about a permanent man, a 10 man with a button. Okay, ठीक है, मतलब मैं एक overall night I understood कि क्या कहना चाह रहे हो आप। रोल प्ले इज ऑल अबाउट कनेक्शंस विच जो आपको काम आएंगे। ग्राइंड डेफिनेटली आई कुड से आई डिड नॉट डू अ क्लीशे एंड से कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट। पर ये जरूर बोलना चाहूंगा कि नॉट राइट नाउ, बट आई थिंक डेफिनेटली आफ्टर फ्यू वीक्स व्हेन वी आर अ लिटिल सेटल डाउन, हम लोग उस टाइम देखेंगे कि आर देयर प्लेयर्स हु डू नॉट इंटरेक्ट। अगर उनका टाइम सर्वर में 50 या 60% like interaction versus grinding, अगर उनका 50-50 से like one side it's heavier, that will be considered low effort RP and we'll be talking to them separately. ठीक है? Then Light says that please add appointment with government or Light to get business in Discord to fix appointment. I'm really sorry, ऐसा नहीं है, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कोई चैनल नहीं ऐड करना पड़ेगा। आई विल कम इन रोल प्ले वेरी एक्टिवली। इट्स जस्ट दैट अभी जो सर्वर का ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस चल रहा है उस वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। सो आई मीन मतलब हम नहीं, सॉरी मैं नहीं आ पाता हूँ, बट I'll be more active guys, so we'll not need a feature for you guys to drag me in RP. Then last Light Name helped us Music Studio RP again guys, ये I think हम लोग miss out कर गए Lex. So again a lot of people who are very talented gifted music artists or trained into it, वो लोग हम लोगों के पास आए with an idea that they wanted to do. It's why hashtag do what you love kind of thing. Again same goes in RP, उन लोगों को करना था। It was something जो I talked with my devs, they said it can be done. अभी बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, but there is something for them to start. But I hope that they'll do a lot of really great things. So and you guys will get this introduced. So thank you. It was not a PTS, but thanks for thanking. Lex, Rusher, anyone? No, anyone wants to take over? इधर GD जी का जो क्वेश्चन है ना, आई थिंक मेनी पीपल हैव दिस क्वेश्चन लाइक कि
If they are doing some kind of a RP or a progression towards something. अच्छा ये वाला I should answer, I guess. Yeah. Yeah. Okay. How do they I authorize think it? so. Basically, it's there are two things. First, आपका character needs to show some progression towards it. Then, second, the idea needs to be unique and not saturated. अभी क्या होता है ना? A lot of times, if let's say we see that there are 3 nightclubs in the server, will coming to me with another nightclub idea will be little अभी थोड़ा vague. ठीक है? अगर if you come up with something जैसे we immediately jump onto those things, जैसे अभी हम बात कर रहे थे music studio RP. There is a guy, if you guys don't know, he was progressing, he was playing music, sitting on benches, वो गिटार लेके गाना गा रहा है, लोगों को entertain कर रहा है. He's people are calling him in parties, success parties, server के छोटे मोटे events में he's being called. So मतलब I'm just mentioning him because एक example देना था. तो first and foremost is the important part is कि आप थोड़ा dedication without वो asset show करके दिखाओ कि what you are progressing for it. And if it is a unique idea और अगर आप उस पर already effort डाल रहे हो, we will put life in it. Trust me. So that is one thing. It might take some time again, जैसे मैं बोला, it might take some time plus or minus, but then वो हो जाएगा. A lot of times people also reach out to us in tickets directly कि मेरा ये idea है. I do not मतलब वो मैं I'll not demotivate you guys to stop doing it, but I would say कि just अगर आपके पास कोई आइडिया है ना, rather just coming to me, maybe try and survey it within the server. मतलब सर्वे कहने का मतलब है कि just try, talk to people, see if that business comes, what kind of response you will get. I think आपको better idea मिल जाएगा कि if you should progress that RP. And अगर उसके बाद भी you are getting a lot of support from fellow role players, come to me and why would I not help? So me or anyone, right? Anyone here will definitely help. So I think I want to be a private lawyer, mental health coach. Private lawyer, there is a there is a DOJ section. You can there's a guy named Rishit. You can tag him even in whitelisted general and he'll guide you. But I'll ask Rishit to connect with you anyway. And for the mental health coach, I would say go and RP with the EMS chief. जो आरपी में जाओ आप, go talk to him. I'm just giving you an idea, ये मेरे को यहाँ नहीं देना चाहिए, but just go and talk to him, and I am pretty sure कि he has enough powers to authorize that RP, give you some things. He can come to me and probably get your RP facilitated. So जो 2 ideas थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. तो yeah, I think there is one more which is a company related thing that I'll take. And then so financing company, just in case someone wants to buy a car, she takes a loan, and in case a person is not able to repay, then car itself will be changed. In past, Rowdy, in past, I think there are multiple events जहाँ पे हम लोगों ने एक similar financing company के RP करने का ट्राई किया है. Eventually that RP crashes and burns because of few reasons. But अगर आपके पास you have a unique idea, feel free to maybe send me or probably DM me or open a ticket. Okay, I think that being said, I'll pass on. Lex Rusher, please take it away. Rusher, do you want to do it or? You go ahead, then 2-3 पॉइंट के बता ले, ठीक है? ठीक. Financing company corporate ringtone हट जाएगा. Please buff the crim items payout a little bit. Okay, sir. If an old RP player is helping a new RP player and goes a little bit of OC, then it should be fair, and also minimum action should be taken if needed. Depends. And we haven't taken any action yet on this. People just want to initiate gunplay instead of talking. I've seen that lately, and action is being taken. मोगैम्बो को डिलीट कर दो सर्वर में से. लूसी भाई, मेरा मैसेज डिलीट हो जा रहा है. ओके. With great availability of guns, some of new RP players just shot down anyone in the game without giving it a second thought. Moreover, twice with the same some of the people in the game don't do fear RP. Yes, fear RP when being pointed out, even if
even if I am just saying that fear RP is good, even if you're being pointed, even if you're a gang member or anything, अगर तुम अकेले और तुम निहत्थे हो तो fear RP दिखा दो. आई थिंक उससे Hostage RP. बुरा नहीं होता है, मतलब आपको भी कुछ मिलता है हाँ यूज करने के लिए, exactly. मतलब Hostage RP is best. Ask me. इतनी बारी hostage बनाऊं मैं, it's amazing. It is actually great to do. I love doing hostage RP क्योंकि उसमें बस आराम से chill करते हो तुम. And you know, you just have to act scared and nothing else. Hostage And- RP is really amazing. लेक्स भाई एक और चीज क्लियर करना था, लाइक हाँ. बहुत लोग गैंग वगैरह कर रहे हैं, आई नो हर गैंग का एक लीडर होता है, सब कुछ होता है, बट एंड ऑफ द डे कितने भी आप बड़े लीडर बन जाओ, कितना भी कैसा भी कैरेक्टर प्रोग्रेशन करो, जब 4 जन आपको आईआरएल में भी अगर घेर के बंदूक रखते तो आपको फियर करना पड़ेगा. आई नो इट्स Yeah. I know it's a bit targeted point that I'm talking about, but it is true. कि आगे जाके और भी गैंग प्रोग्रेशन होगा और भी आप लोग अपना कैरेक्टर स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन कितना भी स्ट्रांग बना ले आपको फियर करना ही पड़ेगा जब 4 जन बंदूक रखेंगे आपके सर पे. ये याद रखें बस. Yep. तो Yeah, as you said it, he's absolutely right. Separate may be reserved queue for government personal. मैं नहीं दे सकता government personal को जब तक उनके double characters हैं. Some people, high command already has been given priors. We will find some people जिनका cop main है उन्हें priors मिलेंगी, EMS main है उनको priors मिलेंगी. We'll provide them connect queue prior, but with people who have 2 characters, there are people who have 3, 4 characters, and there are some people who have made a cop character so that they get connect, but वो नहीं होगा. Until unless it's main, you won't get it. Can we have speed cam near pillbox PD? ये RP में जाके पुलिस पे रिपोर्ट कर. Expecting mature and sensible RP from experienced players, especially gang RP. If experience do low effort RP like randomly initiating gang war RP or gunplay just for this, just for the sake of starting gun war, what can we expect from new players? Even they will believe that's how Crim RP works, which will lead to a lot of toxicity in server. We being experienced should establish some standards to new players. You're right. One thing which I'd like to point out is that I have spec'd few RP players who are not in the same gang right now, but were in a same gang in a different server. And you know, talking about that gang and here in this server and stuff, and then together going and bullying a new RP player. बच्चे हो क्या? मतलब seriously, are you guys kids that you are doing this in RP? And these are, I'm talking about experienced gang RP players. बच्चे नहीं हो तुम लोग. To stop doing such stupid stuff and, you know, bullying new RP players just because you are experienced gang players. Stop doing that. You guys are not kids. People doing this, just report. हाँ ठीक है. One meeting name, but I saw 2 to 3 player roaming near big numbers, only avoiding others. People should be equal to everyone in order to do RP. Perfect, PP. I have already raised this. Thank you so much. Lord Body grind must be a bit easy because once people can buy their stuff, they can keep on role playing rather than grinding. People nowadays just keep on grinding, and if they fail, they get frustrated. Like from hunting or inventory vibe, increase in grinders results less role play. People just came to grind and serve with a grinder mentality, not role play mentality because of hard grind. Yeah, there are things, there are jobs that we have kept, and there are multiple jobs that we have kept in the server just so that people can explore. I see a lot of businesses hiring a lot of people. Myself, Galaxy is hiring from the last 3-4 days. मैं आ नहीं पाता हूँ, that's a different thing. Hunting का जो है वो तो hunting तो मैंने nerf करा दी, so rarely people are going hunting now. People are mostly going to recycle now, which is faring out well for them. But Lord Whitey, this is something that the players need to change. We ourselves, if we make it easy, then what will happen? There will not be any crim if we make grinding easy. Crim नहीं होगा because criminals will be like कि यार grinding easy है, मैं 1 घंटे की grinding में अगर 10,000 कमा लेता हूँ तो मैं crim क्यों करूँ? So everything is interrelated. There's high risk, high reward. If you do jobs
even jobs are getting you good money. Explore different things, and then probably things can happen. But yeah, this is a change that the players need to bring. मैं तो 2 मिनट में easy कर दूंगा, but सर्वर की इकोनॉमी का जो हाल होगा ना उसके बाद, आई नो दैट इफ आई मेक इट, अगर मैं रिसाइकल में 20,000 एक घंटे में दिलवा दूंगा ना, सर्वर में जो 130 स्लॉट है अभी उसमें से 100 लोग रिसाइकल में बैठेंगे. So making grind easy is not a solution. Why don't you raise your RP levels a bit and try and not go behind grind and try and do different kinds of jobs and stuff maybe. And by you, I don't mean, I'm not pointing you out. मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो grind करते हैं. We are done. Sorry, Rashad. I didn't realize कि खत्म हो गया. I Points. think yeah, Mamba wanted Mama PTS. wanted to talk. Yes. Yeah, PTS. So let me see. I'm having a hard time finding people guys to invite. कैसे कैसे खींचते मेरे को दिख रहे हैं वो, कैसे बनाऊं? दिख हेलो रही है हेलो आपको? मैं Is here. He's वो here. हैं. हेलो What हेलो is up? Hello. या ऑल गुड. हाय एवरीवन. सो मतलब मेरी तरफ से तो ये एक मतलब अप्रिसिएशन का टाइम है कि मतलब आई एम वेरी न्यू इन द सिनारियो इस वाली चीज़ में, द आरपी एंड एवरीथिंग. मतलब मैं तो सिर्फ राका भाई को जानता था आरपी में, एंड मैं भी बहुत ही कम कंटेंट को मतलब देखता था. लेकिन बट जिस हिसाब से पूरा सर्वर का जो हेल्प मिला, मतलब पीपल आर वेरी नाइस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट जिस तरीके से आप लोग डे एंड नाइट हेल्प आउट करते हो, हम लोग क्योंकि नए हैं बहुत सारे लोग हम लोगों में से, तो हम लोग कभी कभी मतलब समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट ऑल गोज बिहाइंड, जितना भी पीछे बैकग्राउंड में आप लोग करते हो. शायद खेलते खेलते हम लोगों में समझ आ जाएगा ये चीज़, बट लिटरली जितने भी हम सब लोग हैं फ्रॉम दी SI12 एंड SI12 से भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि कनेक्ट हुए हैं इन द आरपी हम लोगों से, एंड वी आर रियली ग्लैड दैट वी फाउंड देम इन द थ्रू आरपी. एंड डेफिनेटली वील ट्राई आवर बेस्ट टू कि ये जो आरपी का कल्चर है एंड ये जो मतलब कहने को तो एक पीसी गेमिंग होता है, बट एक्चुअली इट कम्स डाउन टू गेमिंग, उसको ग्रो करने का सबके साथ वील ट्राई एंड वील डू आवर बेस्ट. हाँ, हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है बिकॉज एज आई स्टेटेड अर्लियर कि हम लोग क्योंकि न्यू हैं इन सब चीज़ों में, तो डेफिनेटली 3-4 साल पुराने आरपी प्लेयर्स होंगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना हमारे लिए. कुछ अभी तक हुआ हो जो आप लोग के नोटिस में आया हो, सो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हम लोगों के लिए भी एक लर्निंग कर्व है ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं फ्रॉम दी SI12 फैमिली एंड एवरीथिंग. मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पीपल माइट हैव बीन हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, बिकॉज वो लोग चाहेंगे कि हम लोग अच्छे से करें, बट इंसान से भूल चूक हो जाती है, माफ़ कर देना. आगे हो तो भी माफ़ कर देना, बट या वी एश्योर कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा सब कुछ अच्छा रखेंगे, एंड वील ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द गाइज इन द सर्वर जो पुराना खेलने वाले हैं, एंड जितने भी एडमिन्स हैं हु लिटरली डू एवरीथिंग डे एंड नाइट आउट. All right. इसमें I would like to add we have seen very amazing role play from you guys as well. जो Yeah. like we haven't seen from seasoned role players जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं ना, वो लोग भी काफ़ी लोग मिस कर चुके हैं वो चीज़ें. So you guys are doing very good, and like it's like very supportive to the community as well. Also, I still one more thing, yeah. बोलो आप ये पॉइंट कर दो, दिस इज अ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, सो विल टॉक इट आउट. नहीं मेरे को एक चीज पॉइंट करनी थी. स्लैश मी इज बीइंग यूज्ड इनकरेक्टली. स्लैश मी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस योर बॉडी एंड फीलिंग्स. स्लैश मी में कुछ अलग ही यूज हो रहा है. मतलब इट इज आई स्लैश मी, नाम नहीं लूंगा किसका, बट स्लैश मी आई हैव अ बॉम्ब ऑन मी और मैं मार लूंगा मुझे पकड़ा तो ये बंद करो पीजी, ठीक है. और थोड़ा सा स्लैश मी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड बॉडी, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज और समथिंग लाइक स्ट्रेस्ड और स्कैर्ड और विस्परिंग इन समवन्स ईयर्स, जो आप चीज वर्बली नहीं दिखा सकते. आप ये नहीं स्लैश मी मेरे पास बॉम्ब है मैं उड़ा दूंगा या कुछ कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा, वो दैट इज पीजी. तो स्टॉप डूइंग दैट. और हाँ, एक चीज और, while the meeting is going on, I just saw
एक ट्रक रॉबरी इनिशिएट हो चुकी है आरपी में, वेर मीटिंग से हटते ही ट्रक रॉबरी इनिशिएट होगी, पीडी जाएगी और हार जाएगी। तो अब मैं Very क्या बोलूं, realistic. बस हाँ तो अभी मैं पहुंचूंगा ना भी सर्वर में, नंबर निकालता हूं उनके कौन कौन है, करो ट्रक रॉबरी। अच्छा, ऑल्सो वन मोर पीजी थिंग, cuffed Yes. जब आप हो तब you cannot use radio. That's like a common thing which we have seen lately कि this is very basic कि while you are cuffed you cannot touch radio or give a call out. So I've seen recent times ये हुआ है, we'll let them know as well, but it's like just a heads up. Also balancing things, crim PD balance is always going on, like वो पूरा टाइम चलता ही रहता है। हम लोग माय कमांड टीम नोज एज वेल कि मैं कितना उन लोगों को भी बोलता हूँ कि ये चीज़ है, वो लोग भी ये चीज़ हैंडल करते हैं। तो वी ट्राई टू कीप बैलेंसिंग थिंग, जैसे कि ताकि दोनों साइड प्रॉपर बैलेंस हो। सो ये चीज़ें डोंट वरी, ये टाइम के साथ सब कुछ बैलेंस होता रहेगा। आई नो अभी इकोनॉमी थोड़ा क्रिम साइड लिटिल लो था, बट इट्स स्टिल गेटिंग बेटर कॉन्स्टेंटली, तो चीज़ें बैलेंस कर ही रहे हैं। सो दिस विल आगे हेल्प यू गाइस आउट एज वेल। एक चीज पूछा एक जन ने डीएम में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट आई विल टेक इट आउट। पेड कैरेक्टर्स पे मास्क नहीं लगते क्या? इज इट तो मैं बता देता हूँ। हाँ, आई थिंक आई बता डेफिनेटली दो, वांट हाँ टू, आई डेफिनेटली या वांटेड टू मेंशन। प्लीज। भाई गैस जल रहा है उसको गर्मी हुए वो चॉइस लिया है इन ऑल योर सेंसेस, और अगर अब उसकी वजह से कोई एक आपका रोल प्ले, जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ अपना सिचुएशन, आई मेक पेट कैरेक्टर्स फॉर सिचुएशन जहाँ पे आइदर वो कोई डिस्पोजेबल आरपी कैरेक्टर होता है या वो किसी एक छोटी शॉर्ट आरपी के लिए बनाया गया होता है, या फिर आई यूज पेट कैरेक्टर्स फॉर सिचुएशंस जहां मेरे को लगता है कि मेरे को अगर उसके पास मास्क नहीं है तो मेरे को उस कैरेक्टर से क्रिम नहीं करना है, कंसीडरिंग जो मैं कह रहा हूँ। जैसे टीबोन बाय प्लेस विद अस, ही इवन बिफोर हैंड जब सर्वर आ रहा था, he reached out to, there's this one guy जो अगर आप लोग बोलोगे तो you guys can reach out, हम लोग आपको contact share कर देंगे। there is a guy जिससे आप लोग, you guys can talk, and I mean he has his own process, he develops these things. He's not a in-house person, तो हम लोग के पास कोई वो in-house बंदा नहीं है, but definitely there is a guy. But then considering, I would say अगर आपसे मिस्टेक से हुआ है and it's just 1 or 2 days, initial days of your server, ask for a reskin, बिकॉज आगे अगर आप चाहोगे सिचुएशन में कि पीडी उन चीजों को इग्नोर करे, वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपने नोइंगली वो चूज किया है। तो अगर आपको नहीं पता था और अगर अभी बहुत प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, इफ यू आर ओके, बिकॉज इन अ लॉन्गर रन वो आपको बहुत हैम्पर करेगा अगर आप उसमें क्रिम रोल प्ले करने वाले हो। आस्क फॉर अ रीस्किन एंड गेट अ मल्टीप्लेयर पैड जिससे कि आप क्लोथिंग को वो कर पाओ। मेरा एक quick, I have a PTS. I'll quickly try to go in points. So I'll just try to cover it. About character names, definitely a lot of character names. आप लोग देखो, अगर आपका कैरेक्टर नेम थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है रियलिज्म से बाहर है तो थोड़ा सा लेके आओ। हम लोग ऑलरेडी, अगर कोई बिल्कुल ही वो लगता है तो हम वो फॉर्म के टाइम पे ही मेंशन कर देते हैं प्लेयर्स को, बट डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक होगा। तो this is a feedback from other role players that they would feel a little happier. Then comes about bank robbery. I think Pascal raised a point saying that it should not be a direct shootout because people can cause a bank robbery as an excuse to execute a code red. They should stop people thinking of creative plans. Additionally, to those who do not have good aim and would lose. Again, if there's some creative RP comes in between, I would not give you ideas, but I'm pretty sure PD will RP it out at that point of time. अगर actually ऐसा वहाँ पे special scenario होगा, I'm pretty sure they'll not just come in and start shooting. So considering the point, there is some special RP which can be done around it. I'm pretty sure
कि that is not the only way out. वो पूरा वही नहीं एक अकेला रास्ता है कि शूट आउट ही होगा. आप just think a little creative and you guys will be able to see कि और क्या हो सकते हैं ways. ठीक है, I'll not say because it's a RP thing. I'll not say. Police versus criminal chase. I feel number of units should be limited. I noticed that no matter what the opposite vehicle is, police tends to get charges, bites in every chase. Therefore, creative execution becomes next to impossible. Force RP to eventually use super. Nahin, I would little bit disagree, Pascal, with it because मैंने एक सिचुएशन देखी है जहाँ पे आई थिंक साइकिल्स आई थी स्टोर रॉबरी में एंड साइकिल्स से ही चेज किया गया है उनको. कंसिडरिंग द फैक्टर कि हम लोगों के पास कार्स में परस्यूट मोड है, कार्स कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली फॉर रेसेस एंड द क्लास ऑफ कार जो भी आ रही है चेज में, तो वो एक दैट इज अनदर पॉइंट. और देन यू नो दैट देयर आर गैप्स एंड देयर आर जीटीए मैकेनिक्स जिसको ध्यान में रखना पड़ता है. पीडी भी वो चीजें अपने लर्निंग और प्रोग्रेशन से सीखती है जब उनके साथ मल्टीपल टाइम्स सिमिलर वे में स्केप्स होते हैं. सो पीडी इज ऑल्सो अ वेरी एडवांस्ड एआई विच इज ह्यूमन, तो वो लर्न करती है अपने मिस्टेक से और वो लाइक अप्लाई करती है अपने एक्सपीरियंस में. तो आई लिटिल बिट डिसएग्री विद द लास्ट पॉइंट. तो मैं बोलूंगा कि I think अगर but still अगर ये continue होगा तो you can again reach out to me. But at this point of time I feel कि this should not be a problem. अगर आप इसको और closely देखोगे तो this will not be a problem. I think that is all. I see a lot of questions. Any of the staff wants to speak up? Vision, Yeah. Ryder, Noah, where's Rishit today? Gone to sleep. Rishit was here, I think. Was he? जल्दी सोने चला जाता. Oh yeah, one thing. Start using /LOC instead of OOC for everything. LOC means local OOC, तो सिर्फ आपके आसपास के लोगों को देखेगा. Oh, and people talking in LOC thinking कि आसपास और कोई नहीं है सुबह के 4 बजे. LOC is visible by admins. तो जो बिना माइक के आरपी चल रही थी ना तुम लोगों की 2 घंटे तक, मेरे को सब दिख रहा था. तो डिस्कॉर्ड में बैठ के जो तुम लोग करते रहते हो, बताना नहीं था लेक्स. नहीं ये तो इनको लगता है कि हम बेवकूफ बैठे हैं. Yeah, try avoiding Discord group VCs and everything because you know we strike ban on them as well. Third party Discord पे if we see you guys, one guy is at Palito and one guy is at near the cafe or something, and then the guys are coordinating or anything else, you guys can get banned. Even in chases or anything, I would really suggest not to even go deafen and stay on the VCs. Yes. Like Discord VCs में मतलब if we spot you guys, because पता है if you guys are on VC, right, कुछ भी situations होती है, चलो you don't want to meta or something, but जैसे कि you died at one spot, and then the next thing what will come up is if you're not streaming now, so you'll undeafen and say oh my god I'm down here, yeah, help me, ये सब वगैरह, or maybe tactical info जो pass होगी वो सब might get you in trouble. So avoid using Discord VCs because this is a very strict bannable offense. Like immediately if we get it's bannable, so don't do that. Like I have literally seen people grinding at 4 a.m. 6 a.m. in the morning and I'm specking them and they are not talking and doing grinding together and still able to understand कि अच्छा दोनों को अब गाड़ी में बैठ के जाना है चॉप शॉप करने के लिए, तो मत करो. नहीं अच्छा लगता मुझे बैन करना, सीरियसली. Hello. I think took a lot of your time. So thank you. Thank you everyone and Goldie Bhai and whole crew and mainly Goldie Bhai and Anna, they listen to us whine for close to 3 hours. Me लगता है गाइस आज नहीं खेलने मिलेगा लगता है सर्वर में. बोला we are also learning तो the जाना है things. जल्दी. And
कोई भी काम कर रहे हैं, we should have 100% knowledge about it. मुझे लग रहा है मैंने स्ट्रीम किया बस ये दिखाने के लिए The great learning experience too. कम्युनिटी मीटिंग And thank you, especially everybody Uh, behind the team. I one mean, like you guys. so sorry to cut you in between, Goldie bhai, No but problem. guys, before you guys are dropping, just wanted to highlight one more thing. SATUL got nominated for the esports award. It is a proud moment for the complete Indian gaming community. So praise it, please. I would just and vote for it. वोट करें Vote, yes. vote जरूर करें. That And is I would not say Indian gaming community. I would probably For- say Asian gaming community. हाँ exactly. तो It- वो it's, we'll probably very add proud a thing. हाँ we'll probably add a way and पूरा tutorial on how you can vote. Either Discord पे बना देंगे and we'll do it as an announcement. तो yes, please do that as well and be a part of this happiness and this proud moment. Everyone, I would just suggest that. Thank you. Really appreciate that. Congratulations once again. Thanks, Chacha. Thank you. चचा तो मेयर का तो नहीं हो रहा है आपका कर रहे भाई, सुबह 6 बजे खेल रहे थे। हेलो अरे भाई हाँ खेलने सही में सुन होता ना, आपको आगे I- कैंपेनिंग करना होगा. Goldie bhai, I saw your T1 playing at 9 a.m. in the morning. मैंने कहा, "हैं?" Ah, me and Light were talking about it. Okay, guys. Thank you Chalo, all for alright. sticking. Thank you all- everyone. Thank you everyone. So many of you and everyone on everyone's stream, and thank you for amazing questions. अभी भी बहुत सारी queries रह गए होंगे. I'm really sorry हम लोग सब आंसर नहीं कर पाए, but keep reaching out to us. I mean, we'll try to answer. और अगर कुछ ऐसा होगा तो we'll send those things in announcements also. Yes. We will do this more regularly. नहीं तो Yeah, आई we थिंक should. एवरी 1.5 or 2 months हम लोग ट्राई करेंगे करने का. और या फिर अगर इमीडिएट कहीं पे नीड फील होती है कि आई मीन दिस इज अ टाइम वी आर आइदर गोइंग रियली गुड और डूइंग रियली बैड, विल डेफिनेटली डू दिस अगेन. But thank you everyone from the whole, on behalf of the whole VLT Roleplay crew and Lost Gaming. Thank you guys. Thank you. Bye guys. See you in RP. इसको मेटा मत समझ लेना कि आके मेरे को मिल लो आरपी के अंदर. आपने बोला था see you in RP. चलो बाय बाय. चलो गाइस Thank you, everybody. मिलके आते चलो हैं thank नेक्स्ट you guys. Enjoy करो। Like करो, subscribe करो. Guys, go like and subscribe to UFO's channel, everyone. हैं? Please note that. मैं तो करता ही नहीं. Bye bye everyone. Bye-bye. Yeah, Hello bye. guys. Bye bye. Bye guys. Chalo, Enjoy bye करो, guys. game Thank you enjoy so करो। much, everyone. Bye bye. गुड नाइट. या गाइस अपन भी अपना दुकान बंद करते हैं. मेरे को बहुत नींद और प्रेशर दोनों आ रहा है. जाना पड़ेगा. जो भी स्ट्रीम पे है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड बहुत कल यार पता नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, स्ट्रीम भी नहीं कर पाया. मसाला था यार, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं. और बाकी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी ऑन स्ट्रीम. टेक टाटा एंड पीस आउट. मेरी तबीयत 3-4 दिनों से खराब है. मैं बातचीत नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ बेसिकली. वैसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बट तभी भी लाइक स्ट्रीम वगैरह तो करनी पड़ेगी ना. एटलीस्ट घर पे बैठे बैठे कुछ तो होना चाहिए. तो इसलिए समझ रहे हो बहुत बहुत मतलब बेसिकली मैं बाइक से गिर गया एंड देन लाइक उसके पेन में मतलब बाइक से गिर के कुछ 1-2 वीक हो गए. 2 वीक भी नहीं, 1 मंथ पकड़ लो. है तनिषा, वेलकम टू स्ट्रीम. क्या हाल है? एंड देन उसके बाद कुछ सीन हुआ मेरा. देन लेट इट गो दैट सीन. उसके बाद लाइक वही सर्दी खांसी एंड ऑल, मतलब वो सीन का भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा बॉडी पे एंड वो सर्दी खांसी का भी. तो सीन का तो 1% समझ लो क्लियर आउट हो गया, बट सर्दी खांसी का भी क्या है तो मैं लाइक कुछ चिल्ला विल्ला नहीं पा रहा हूँ आज पे. तो ये कि थोड़ा सा मैं लाइक मसाले में थोड़ा सा लाइक जब किसी वॉर होती है तो थोड़ा सा ट्रिगर हो जाते हैं बंदे अंदर से. भैंसुद बंदा डाउन हो गया तो एक चिल्लाना होता है ना, चिल्ला नहीं पा रहा था. मैंने बोला तो स्ट्रीम पे लाइक इतना लूज दिखा कुछ फायदा नहीं है.
ये वाला थोड़ा स्ट्रीम आज मैंने कर दिया और मैं भी लाइक कुछ हो नहीं पाएगा। और 53 की क्यू में 128 बार। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट। वैसे यार थैंक यू तनिषा जॉइनिंग फॉर स्ट्रीम। थैंक यू यार। मिलते हैं गाइस, बाय, गुड नाइट।